All right. Chem 1, Chem 2, Chem 3. If I can get an audio check, that would be great. Testing, testing. Audio check. Okay, audio should be okay. Testing. Good morning, everybody. A quick audio check would be great for all of us here. Thank you. If audio is okay. Yes. Live stream is good. Audio is good. Thank you very much, T. So let's get started. Monday, July 20th, 9:05 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to superareas.com. Thank you for coming to online to my stream. Anybody who's gone to Trinity office, Vancouver, Calgary, or the other Mississauga in lifetime, thank you for coming and going there in person, as well as on online. I'm your host, Rafay, and I'll be with you for next 2 to 3 hours. Sorry, I went to bed at 5 o'clock in the morning, so a little getting ready to the schedule. So
Anything I say here is not financial advice, just for informational, educational, entertainment purposes only. I'm not responsible for your profits or loss. I'm not. So do what you see, don't do what you think. And we're going to have Daniel's brief shortly. Areas are updated. Let me just do a couple of more things and we'll be fine. So we can get these here information out to for you guys soon. For those that are with our private stream, because on TikTok or free streams, we turn this off randomly. And 381. So before I went to bed, I did yesterday's session. I'll do as many sessions as I can. Exactly. Is it this one? No, it's this one. So I'll do as many sessions I can. I did last night at 6 p.m. after we called out 3 trades. And before I went, I called out one trade and I said, wait for 29,000 and 997. So wait for 997, 29,997. So I woke up to quite a few trades being done. So just saying that 29,997 got done already. And I had placed our trades on this machine. Let me see if I can. It's not this, it's not this, it's this. Let me turn on the TV. Okay. For my music, morning music. So take a look at. You're not getting one. All right. So I'm not sure how many of you've taken the 29,000. 28,997 was the number that I had given out. So we called yesterday as from open at 6 p.m. 874, that worked. Then the market stopped at, I believe, 673. 1 second. I think we called it. Yeah, there you go, Mayurji. Congratulations. You have taken 73 points from there. That's fine. So these trades that I do, hopefully they will go. Of course, nothing is 100%, but so 3 trades major. 28,874, which I did not take. It was landing at 8 p.m. yesterday, which was the candle opening. Then, but I did take 28,963, and I did take 20. It's not supposed to be 2997. It's supposed to be 28,997 done. It's not 29,997. Yes, I am on TikTok. I can't reply to you. I've turned off the comments so you can just come in, browse, maybe sit. Randomly, TikTok audio may get cut off. So just saying. All right, let's look at some before the brief begins. I'll get used to the schedule. So I know it's a bit of a surprise for some people Monday morning that where am I? So the Mississauga office, Win Lifetime, you will have Mr. Daniel, Mr. Majid, Myroon, Mr. Jatin, and Miss Tulip there. The other Trinity office, it will be Mr. Happy and Mr. Vikram. And then the last Calgary, you have Mr. Bilal there, and who do you have? Vancouver, Miss Berman there, and myself. I'll be doing the trades through live stream, so TikTok, Zoom, Telegram, and YouTube, anywhere the stream can go. Let me just quickly update one thing. So I'll make this schedule a lot more organized very soon. 20th. So what is scheduled for us on Forex Factory? Nothing. Just should be a smooth day.
Of course, we will listen to Mr. Daniel's brief shortly. So, with Trump in power and the war going on, nothing is smooth. By the way, you can think and hope that there's not a random thing that could happen, but you always have to be on your guards and you always have to be on your toes before he could say something. And just assume that you're going to put a trade and you're going to have to work with the volatility that's there. It is what it is, but we cannot stop trading. Doesn't matter how volatile the market is. Let me check the areas. Evening areas, what got hit? I believe nothing. You have 29,300, no, 110, 20, 75, 75. Let me just fix this. So whether I'm physically there, but I will be with you guys, 45, did not go there. The evening areas did not get touched officially. However, let me fix the alert server because location has changed for me. Uh, so what's the benefit of doing this? It helps me, first of all, uh, it's more convenient. I can start a stream at any time. And then, of course, okay, that is done. So my Lucids got cleared in each account. I had put in 5 micro because I wanted to just be over with these ones. And 1 micro I made, give me a second. WADA, I did not because I want to be in front of it before I take that trade, before it gives me a signal. So, okay. All right, no positions are running here. Connect. There shouldn't be any problem. Just depending, there shouldn't be. I'm fine. I'm okay with Lucid. Everything. Just make sure you have signed the correct documents. If it's a new account, and data delay, if you're getting, you will have to reach out to the funded company. It's unfortunately it's not in my power. So officially, your what area is done? Let me double check. Reload. Okay. So price went to mornings R1. So R1 is done. Sorry, R2. So NASDAQ price is right in between R1 and R2. So I believe your base is up. Yep. So easy to set up Friday. That's why I could not come online. Insert 2 columns left. Okay. And but don't worry, I'm not leaving in lifetime, nor it's I'm here for the lifetime of it. It's just organizing it. So more over there, it's more beginners in the room. So in order for you to join my stream, you have to know what at least MNQ is, what MES is, what overbought, oversold, Fibonacci, MACDs, things like that. So base is down, pressure is down when the areas were posted.
I think I'm copying the wrong one. I'm copying the Friday ones. Monday, Thursday, area base is up, pressure is down, but that pressure has been down since every trader is right 50% of the time by default. You just have to kind of improve your odds from 50 to where is this? Okay, so I'm gonna do my work. Night session high. Let's do this. So market base is up, but pressure is down. Let's do 15 other. What is my strike price? Strike price became 29,300, which was yesterday's, and next is 75.77. Okay, no events major, so and no earnings. Yeah, no earnings, no events. We're okay. So night session highs 29,111, 29,110, or 111. What is my low for the day? It's 28,706 for the from 6 p.m. until now, so 9:15 a.m. What is my pivot? Pivot is standing somewhere 856, 28,856. Okay, $400 move, 29,111, 28,707. So $404 move for the whole night. We took two trades, and so now, guys, I'll be coming randomly. Like, I mean, of course, morning session, I'll come fully prepared as a morning New York session, but I may start early. I may sit until, so if you have the luxury, I'll keep the Zoom on. I'll keep the TikTok, I'll go randomly because I've turned off the comments because it's so difficult to moderate. What is my high? 75.45. 75.45. What is my low? 74.82. 74.82. And $63 move. My pivot of ES has become 75.02. 75.02. What is my value area for Friday? 75.31 to 75.32 to 74.99. 74.99. And these I'm reading from 60 minutes. 75.32. 75.32. So, and here and there I'll explain you what WADA is and how does this work. What is this project that I've been assigned to lead? How can it be beneficial? But let's get morning session started. Okay. Let me do this. All right, this got posted. So areas are updated. Areas are plotted on the charts. So again, just before Mr. Daniels, so I will cut off the audio for our public stream for about until his brief is over. I don't know if the audio on TikTok is okay or not. I don't know. Right. So right now we are in between R1. This looks ugly. Come on, need a bit of spit maybe. Wait. No, that's not gonna do it. Screen killer. If you wanna know what my looks like, you guys can of course watch yesterday's TikTok video.
That explains how I've set up my office here, home office. If you're gonna save some taxes, might as well use a portion of your home as an office for trading. You can write that off. Only annoying part is the number of mics. Every app requires its own mic. And I don't want to merge it because I can merge it. However, I would, because I need to randomly shut off the public. So and what do I see? I've posted the video of my charts and everything. So the good thing is I don't have to moderate TikTok. It's just going itself. S&P 7529. All right. Good. Thank you. So on the Zoom is where you actually see the actual full, what do you call it? The full screen of the charts. But on the live stream on Telegram, maybe it's good for a bit of audio. But so we're right now heading towards night session high. Numbers, give me a second. Let me look at what's the next ready expected high. 370, 345, 29, 194. Okay. My first attempt, of course, would be the night high to retest the upper zone around 110, 115, about 100 points from here. But safe trade, because I don't want to do this on opening range breakout, which is ORB, 9:30 New York session. There's a bit of a volatility, and then exactly uh, from 9:30 to 9:45, we don't trade until 10 sometime, just to kind of observe the market and see what's going on. And maybe the 114 zone could give us something. Ninja pivot R2 is there. That's a possibility. And of course, ES, I would wait. Where's my ES areas? 1 second. I'm going to place my trade. Let's see. Is there an equal high somewhere in this zone? But I will observe, of course, from 9:30 to 9:45, and then decide. So don't worry, at the office, you for beginners, you have lots of options there. Mr. Majid for absolutely brilliant for the completely newborns into trading who have no idea what Ninja is, what MES is, what Take Profit is. Then you go into Miss Tulip's room, a little bit more advanced, but still beginning. She can call out the numbers. Then you, for NASDAQ and a little bit more advanced, you go to Mr. Jatin. And then Myron is there. He does his gold. He does all sorts of markets. And then myself from Min Lifetime, I'm doing it just here because I have more luxury to be able to. And honestly, I'm just running away from distractions. Distractions. My Ninja is not working. My Trader Weight is not working. Like here, I want to focus on real numbers rather than just fixing it people's any desk. So not that I'm just there's different people with different roles now. We this company has grown in the last 3 years to a full-fledged support team, and so you guys can of course reach out to. If everything fails, then like we have the super areas chat, the copier issues, flowbot issues, um, live stream issues, areas issues. They can all fix it, no problem. For me, my job is to analyze where can I buy MNQ, where can I sell MNQ. Um, that's it. So
my job. Of course, no trader in the world is 100%, including mine. It's not like I'm gonna say it and every single day it must follow. But I look at the math behind it and try to make some sense out of it. That's it. Nobody controls the market, nobody moves it. These are just predictions, and based on these predictions, we take a trade and go from there. So I am reading your thing. I'm going to try to make you a co-host. Yeah, there will be Nareshji, evening session. Whenever I'm free, I got no house chores to do. I am trading. So yesterday at 6 p.m., I kind of, so there's not going, the moment you see an alert, if I'm offline and on Telegram, you see an alert that Rafay is online, and can you chat with support for now? And if they cannot fix, I will. No problem. No, we're not providing 14-day trials. Sorry, guys, not for the software. Nothing. That used to be old video. Then there's no 14-day trial for our system. We only want to take serious guys. Then, and I don't want to explain my software for free. Period. It's okay. Thank you, Ji. Yes, Shabnam Ji. Yes, I looked at the clock. I had the widget open, and then there you go. That's working, coming. So, thank you, Ji. Yeah, they're much. Thank you, Ji. Yes, much more focus. Of course, I can be wrong. And plus, I can get to sit in my pajamas. I don't have to, be suited and booted and come to the office, and I can enjoy my music here. There you go. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sasyakal. Have a nice speech. Microphone check. You can hear me? Assalamu alaikum, sir. Good morning. Now the time. Rizwan bhai, good morning. Ji bilkul, Manjeet ji, absolutely right. Anil, good morning. Thank you, Anil. A quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or on our training floor not intended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decision, but not make it for you. And we take no responsibility at all for any action taken by any subscriber or user. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes, always place your stops, and always ready to accept those losses and do what you see. Don't do what you think, and treat this market the very first day you treat. And all the areas we have on our superareas.com or on our charts or graphs are not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only. And we take no responsibility at all for any action taken by any user or subscriber. A very smooth week. Whole week is very smooth, very less news. If you see, we total 5 days, we have bunch of news. It's today we have CB leading indexes coming at 10 o'clock and nothing. Then whole day nothing is going on. Then tomorrow we have nothing. 8:15 ADP, and then 4:30, and then Wednesday we have only crude oil inventories. And Thursday, unemployment claims and natural gas story, nothing. And Friday also, we have flash manufacturing PMI. That is inflation data. We'll see new home sales on Friday. Very smooth pick area to area, green mid-band to go up, magenta mid-band to go down, and if change color, just get rid of it. Actually, it's opening above the mid-range, first mid-band, beautiful push to the upside, 7.5 point from the mid-band, done for the day. Even NASDAQ, beautiful, nicely push to the upside. R2, keep eye on R2 on S&P, keep eye on R2 on our NASDAQ as well. Base is up, pressure is down. So high to go low would be a good strategy.
S&P 500, our high for the day is 75.65 to 75.78. Low for S&P 500 is 74.55 to 40. NASDAQ, our high for the day is 330 to 400, 29,330 to 400. And our low is 28,540 to 460, 460. So overall, right now, opening above the mid-range, so night session high, R2 should be tested. Actually, we are done. R2 is done. The push that we had to the upside and the rally that we had to the upside. If you are done, now let me tell you guys, if you are done right now in 5 minutes, less than 5 minutes, even not since I start 9:31 right now. So it means you're done in 1 to 2 minutes, call for the day. It didn't mean until 11 o'clock you must trade. Switch it to demo or close your computer and call for the day. We have the swing high 72 points from Friday low, S&P 500, 72 points. Dow is not giving us much, 512 points up, and almost it came down more than 100%, but it's not giving us a lower low. And Russell 2037 points, 701 point on our NASDAQ. Beautiful push to the upside, break our highs, break our Friday high, and right now give us a lower high. I'm talking about the swing high on NASDAQ that was 1,388.75. That was on 16, if you remember, July 16th high, and July 16th high, Thursday high came down 1,388.75, and this is a retracement of that swing. It means we just reached 50%. So this is a 50% area. Should go further up. That's where the expected high is. So we might see our expected high, but best is once each area just hit and run, and then area break, go above the area towards your expected high for the day. So remember, green red band to go up and magenta band to go down on our 1510 match with 3020. Both are synced. Beautiful push to the upside. Euro is down. Euro went open. British pound went up at open, and after 4 a.m. it just tanked. Especially if you look at the euro came down, break our Friday low, break our Sunday low. Actually, both markets open with the gap, and they fill up the gap in just 3 hours. Our 11 p.m. last night, our gap was filled. And beautiful, it went up, hit R1 and tanked from R1. Very beautiful push to the downside on euro, British pound, and Canadian dollar. Canadian dollar also opened with the gap, 3 hours, fill up the gap, went up, hit the R1, and just tanked. I'm talking about after 4 a.m. when British pound and euro came down. It took Canadian dollar also to the downside. Crude oil is down, and crude oil, our low for the day is done. Our expected low is done for the crude oil. So crude oil went up, if you remember, $6.78. That's a humongous push. Actually, crude oil opened up with the gap, and it filled up the gap this morning. I'm talking about 4 a.m. when euro and British pound, Canadian dollar start coming down, and crude oil also came down 75% out of $6.78. It came down $5.12 right now. And S3 for our crude oil, and also low of the value area, expected low, means we have a multi-support at this area. Around the 80, 40, 80, 30, $80, 10. I would say $80 would be a good, very nice area for crude oil to be paused. Then we have FDAX. FDAX, when euro and British pound was coming down, FDAX went up. Until this previous 1.5 hour, it started coming down. FDAX came down. It was above PP and right now below PP area, but $246 push to the upside on our. Actually, FDAX is very beautiful. It went up $246. If you are picking $10 on FDAX, you are king. You are the master of this market. And FDAX areas are so precise, so beautiful.
Whenever it goes to our, go back and test your FTX. It's very beautiful bounce back from our areas. Gold right now at a PP area, $59.50 extension. So right now we had a swing open with the gap right away in 2 hours. It fill up the gap. I'm talking about yesterday. And right now extension to the upside on our gold, and gold hit R1, bounce back down right now below PP, but overall gold should go up. Copper is up. Copper from Friday low. Actually, it's in retracement, 69% push to the upside on our copper. And copper is very close to R2 area, intraday R2 area. Silver is up. Gold is down below PP. But remember, our swings are up on silver and gold. Silver went up $2.65. That's beautiful, smooth push to the upside. Silver and gold are two markets. I would say you can put the Bitcoin as well. Whenever these markets drop out from 240 chart, you just go long. It gives you a beautiful wash. If Friday low, anybody who entered at the Friday low, go long, they already made more than, I would say, $16,000 push to the upside, because each dollar on silver is 5,000. So it went up $2.65 by 5,000. Imagine how much money is there. Natural gas right now below PP. Actually, natural gas is not going to go up until we see some big means inventories are less. There's no big supply, so it will keep price to the low. If we have a more supply, then it goes further down. Overall, in summer, the natural gas price stayed below $3.50, $3.40. But overall, it's good. It's good. Right now, it went up 0.069, and it came back, give back the 50% of that push on our natural gas. Natural gas, $1 value is $10,000. So right now, Bitcoin start bouncing back up, $1,355. It's almost 96% retracement of the push that we have to the downside. I'm talking about when it opened. So Friday high came down $1,405, covers up 96%. That is $1,355 push. Ethereum, same thing. Ethereum went up very nice. Ethereum, look, Bitcoin is not, it went up 96%. So Ethereum went up more than 100% push to the upside, almost 110% push to the upside. Went down $49.50 and then went up for $54. That's 10%, almost 10% more than the push that we had to the downside. Again, guys, this whole week is very nice, beautiful, smooth week. 10 o'clock, we have CB leading indexes coming. They're expecting a minus. We'll see which way the price is heading. But best is in these days, either pick the areas or just stay with the trend. Don't go against the trend, guys, unless you see the areas are there, R2 is there, expected highs there. Yes, you can pick the counter trade. But if area breaks and everything is green, just go with the green to go up and magenta to go down. Please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here. Manpreet, good morning. Manish, good morning. Good morning, everyone. All right, you guys saw the areas and you heard the brief. High to go low is the plan. Let's see which way it wants to go. But my first attempt is somewhere around 195, 194 before I go to expected high. Before I go there, that's the plan. So let's see if it bounces somewhere around that zone of 194. Let's see. Should stop somewhere around there.
So I'm just establishing my opening range breakout. So far, it has been what? Almost $146 move. So since the morning, price has gone into there. It should retrace back down. So it's way too many charts. Let me double check. Zoom in here. Let's see. So the numbers that are, let me just start writing it on the correct day. So today, high, it's coming soon. So let's look at expected high and our area. So area starts, MES का मैं देता हूँ जी, wait कीजिएगा, MEM. So 370 is okay, but even the strike price of 300 is okay. What is my strike price today? The strike price is 29,300. So 190 or 194, somewhere around there. So the first around 9, let's hope it will come by $193. So 190 to 200, it should stop definitely. So it should. The word always is should. Hopefully it will. That's the, because we're quite a bit up. We're almost up $400 since yesterday. And so the market fell down 1,650 points and it's up almost $760. 162 coming soon to our area, 167. It has to break. Let's see. So 193, 192, 190. Hopefully we'll stop somewhere around there. Just trying to see if there's equals somewhere around here. Oh yeah, oh yeah. On July on 17th or so, we got some 178 coming soon, baby. 182. Come on, a little bit more, little bit more. 190 तक चला जा. Very close. 182. 190 से risk किया जा सकता है. Come on, 172, 168. Little bit more push. Little bit more push. Equal high बैठा हुआ है यहाँ पर. इधर 182 तक गया. We got 9:45 officially done, which is the time, almost a minute to go. 17 seconds to go. It may shoot up. Of course, always know your stop losses in case it doesn't stop before 300. So I'm giving myself $100 gap. So if it goes against me versus, so 194 to 300, it's a $106 move. We're inside 190. And so far 5 points came. So far 5, come on, 190, 191. About to get picked up very soon. 192.
5 points are done from 190. Let's see. Your trade is done. Congratulations. 190, your trade is done. I was sitting in 193, didn't, but you're done your trade. 190 trade is done. Done ho gaya ji. 190 trade is done. If you took 190, you're done. Congratulations. That's how simple it is to analyze NASDAQ, just the numbers. I was sitting somewhere some at 193, some at 195. It's okay, but the 190 trade is done. I'm up $40. Okay, now it should shoot to the downside. Yes, everybody is in our special group. I didn't implement any MES. Wait करें जी MES. Wait, expected high का wait कर लें. It gave you $40 from 190. So when I say a range, I will always give like 190 to 195, something like that. So if you took 190, my precision order was sitting at 194. It's okay. With NASDAQ, you can never be too safe, right? But trade is done. I'm just saying, this trade. Now it should come down. So very laser. So I wrote on 20th. So I'm not, guys, we're changing. So on this page, I wrote 193. So 0.5. So very, please do not take 194 again. Now you take expected high. You start your risk somewhere around. First, it should do a retrace now. So, okay, 1 second. So start 299. I think we have a high. Oh, expected high. It should next stop at around 265, yesterday's low. But just say hello, hi, I took 190, I'm done. That would make my, so I'm not, I'm saying then I'm not at least looking at in the dark. So then I'm not speaking. Congratulations Zubair bhai ji, आपने 3 अकाउंटों में 190 ले लिया. It's okay जी मयूर जी, it's okay. 190 रेंज में रखना है. It's okay. इतनी लेट आ 190. तारक भाई ने 190 ले लिया. 194 अब रेलेवेंट नहीं है जी. जुबैर भाई ने ले लिया. हाँ, आप हरलीन जी 195 पे वेट कर रही थी. It's okay, but that trade is done now. Please do not retake. Looks देखें 190 से 140 आ गया, 50 पॉइंट मूव हो गया है. So please don't take that trade now. So मैं एंट्रीज कॉल करता रहूँगा, no problem. देखें कितना स्मूथ है. I can just have to read. So very, very close precision. थोड़ा अपने आप को बफर दे दिया करें मूव करने का मार्केट को. तो बट एज क्लोज. सो आई एम कॉलिंग दिस ए डन बिकॉज़ रेंज दे रहा हूँ आपको. तो रेंज ऑफ कोर्स 5 से 8 डॉलर की लाइक लेजर फोकस में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में सिर्फ एक टिक का एग्जैक्ट फर्क रह गया. 2 टिक का 193 लिखा था, 192.50 से जारी है. कंग्रेचुलेशन शबनम जी, 1 अकाउंट 190 डन, 25 पॉइंट्स. You are a pro, you are a veteran, you're amazing. Thank you very much. This is rock solid trading where you wait and you wait and you wait and you wait and then you make money. So I'm glad the retrace is done. So now 950 trade aa gaya ji. कितना मजे का ट्रेड आया जी. 113 डॉलर तक आए. 77 डॉलर की मूव आई है. इट्स ओके, बट लर्न टू प्ले लॉन्गर टू. मैं आप लोगों को, अगर वो पिक हो जाता तो लाइव चल रहा होता. एरिया टू एरिया का ट्रेड का फायदा दूंगा. लॉसेस में आप लोग लंबा बैठते हो, प्रॉफिट में आप लोग छोटा बैठते हो. तो अगर बैठ सकते हैं तो 90 पे निकल जाएगा 100 पॉइंट्स के बाद. मैं अब बैठा हूँ कुछ में 90 वाले में, मैं अब निकलने लगा हूँ.
and I'm done almost. अब घूमती फिरती रहे 2 माइक्रो से या 1। प्यारा ट्रेड था जी। देखें प्रॉब्लम, आप मुझे MES पूछ रहे हैं, मेरे पास ना पेशेंस ही नहीं है MES के लिए। और देखें जी, बिल्कुल 100 पॉइंट की मूव दी है इसने आपको। So now wait for the next retrace। ये अभी तो 29,000 कौन आपको इस तरह की ट्रेडिंग करवाएगा जी? बोल के नंबर बोल के, सुपर एरियाज ओनली, स्कैल्पर्स भी। आप स्कैल्पर्स वाले टीम डिफरेंट हो गई है, अब इसको आ लेने दें, गिर लेने दें। अगर अब लॉन्ग जाएंगे तो वेट करें, मुझे पूरी 8 मिनट पे कैंडल क्लोज हो जाए, इस डायरेक्शन एक ब्लैक कैंडल बन जाए, तब मैं आप लोगों को अगला नंबर दूंगा कि बाइंग कहाँ से हो सकती है। तो you're done 190, ये कैंसिल हो गया जी। 194 देखें, बिल्कुल जहाँ हमने कहा था, जिस जोन पे, अगर आप जूम पे देख रहे हैं, तो यू आर डन फ्रॉम देयर। तो थोड़ा सा रिस्क ले लिया करें, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड टू गो अहेड एंड 1 माइक्रो के साथ आप आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। वहीं आप लोग 1 मिनी लगाना शुरू कर देंगे, फिक्र ना करें। फिर आप कहेंगे ओ माय गॉड, ये तो पैसे बनते हैं। ऑफ कोर्स बनते हैं। जब आपके ट्रेड शोर शॉर्ट हो जाएंगे तो फिर आप 100 पॉइंट की मूव ले सकेंगे नैस्डैक में। तो ऑलमोस्ट $160 की मूव हुई है। ठीक है, आपने 20 लिए, 10 लिए शुरू में, क्योंकि ये वाली मूव्स मैं आपको दे रहा हूँ, इट शुड होल्ड लॉन्गर। सो 192, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट मी राइट। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि 195 और 370 के दरमियान क्या आ सकता। 190 और 370 के दरमियान गाड़ी कहाँ रुक सकती है? ओके, टाइम टू टर्न इनटू 240। तो ब्लाइंड हो रहा हूँ। Okay, there's a possibility of it going to, अब आप ले सकते हैं जी somewhere 255। ओके, 190 को अगर ये तोड़ते हैं तो नेक्स्ट नंबर आप लोगों के पास आ रहा है। अब मैं आपको बता भी देता हूँ ये कहाँ से पिक किया। 240 का चार्ट खोलें, जो 4 आवर कैंडल होती है, वहाँ एक रेड लाइन जा रही है अराउंड 250 से 260 के दरमियान। ये है नाइट का लो जुलाई 16 का। तो 16 जुलाई का है। येलो डॉट, येलो बॉक्स आपको नजर आ रहा है वहां से। सो 250 to 260, 250 to 260, it should give us some points for sure before, if it want, right now it's making a 15-minute equal low। So abhi candle nahi close hui, we still have 6 minutes। So let's do 190 to 195 or 200। This one let's do 250 to 260। Okay, so तो 250 to 260 always questions me कि कहाँ से आ रहा है। तो I will give you some equal lows, equal highs। तो ये वाला नंबर मैं जुलाई 16 के नाइट से ले रहा हूँ। वन नंबर है जी 240 से 250, वो जो आपको एक लाइन नजर आ रही है, रेड लाइन। तो अब क्योंकि ऑफ कोर्स प्राइस मूव कर रही है, अब रेजिस्टेंस की तरफ जा रही है। सो आई विल गिव यू कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 250 और 60 के दरमियान रुक सकती है। तो अगर किसी ने नैस्डैक करनी है तो प्योर नंबर चलते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन लुक एट 1 मिनट, 15, 30, 260। सो मेरे पास नैस्डैक के हैं डेली 240, 60, 30, 15, 1, because I don't trade NASDAQ on
price action of, yeah, you can do 60-40, maybe you can do overbought, oversold, but $165 की ये मूव आई थी 190 से, एंड अभी बाय कहाँ से होना चाहिए, वेट करें, अभी इसको बाय कर लेने दें, कितनी बड़ी मूव है, कल रात से ये आ रही है मूव, पहली मूव है 423 321, so 29 192 minus 321 28 870 870. Let it come to pivot. अगर ये pivot पे आती है, रुकती है, तो it should give us something. Pivot पे, alright, 3 मिनट रह गए कैंडल खुलने में, pivot पे आ लेने दें इसको. That would have been an awesome trade. वाडा ने सिग्नल दिया था, I did not take it because I was waiting for 194, but did not go there, which is okay. Congratulations, ये 50 पॉइंट लिए हैं, exit 1, enter 187, exit 85. Congratulations जतन भाई, very good, awesome. Will it affect? Yes, ये देखें, ये जो है आपके बेजियन न्यूज़ क्लिप, yes, अभी जो वॉलेटिलिटी है मंडे की इराक की, ऑफ कोर्स फॉरेक्स फैक्ट्री पे ये डंप का एक आया है आपका रीजन, बट दैट्स वाज 2 आवर 42 मिनट्स अगो. अभी ये सिर्फ रिट्रेस दे रही है ऑल द वे, जो पूरी रात को चढ़ी है उसका रिट्रेस. Just math, guys. It's not rocket science. Not just very chota grade 5 का math है. Swing retrace extension. That's it. ये the mother of all trading, as Mr. Daniel always tells you. देखिए R1 तक गई है, वो R2 के टॉप से. मैंने R1 को अभी नहीं लिया, वेट करें. R1 बिल्कुल टॉप पे आके और R1 को भी पेनिट्रेट कर रही है वापस. तो अगर बाइंग बनती है तो कहाँ जी हमारी बनती है, पिवट पे रुकनी चाहिए इसको. It should stop at the pivot. So आ लेने दें 850 या 6 857 पिवट पे रुक सकती है. 200 पॉइंट की मूव थी ये, अगर कोई लकीली बैठा रह गया. मैंने नहीं लिया जी R1 का ऊपर इतनी दूर से तरफ पिवट थोड़ा सा 923. ओके, एक सेकंड जी, 856 से पहले कहाँ, 60 मिनट का मिड कहाँ खड़ा है, 30 मिनट का मिड खड़ा है 903. अभी तो R1 के टॉप से जा रही है वापस, बिल्कुल डॉट टू डॉट टच करके R1 के टॉप से जा रही है. Okay, let's turn to TikTok. Okay. आने दें, पिवट तक आ लेने दें. पिवट से थोड़ा सा ऊपर से जा सकती है, थोड़ा सा. It can go. हाँ, निंजा का पिवट R1, ठीक है, आपने सही लिया, रीजनेबल, बिल्कुल आपने फैसला ठीक किया था. लेकिन आई एम जस्ट हमेशा गिरती हुई प्राइस को बाय करना ना, तो थोड़ा सा हौसला तो और मैं कहता हूँ गिर जाए. All right, guys, 29 seconds till our 10 o'clock.
And let's see, there's always a spike around that time, 10:05. But even if you took R2, you're done. Like the upper pivots. So from, let's see what happens in 30 seconds if there's a spike. It should stop at 30-minute mid. पिवट का वेट कर लें, पिवट ठीक है. वीडियो से मोनेटाइजेशन सारी खराब हो जानी है. यूट्यूब के कॉपीराइट लाइसेंस गाने जा रहे हैं साथ साथ. बॉटम रेंज R1 का चला, बड़ा रिस्पेक्ट किया, डिड नॉट टेक. Sorry if these things are bothering you. You can number लेके फिर mute कर दिया करें. I cannot operate without music. अब तो न के जाओ जी वापस 194 को छोड़ के जाओ जी 250 पे. अब यहाँ से $250 के बाद हम कुछ करेंगे जी. $250 के बाद ES का आपको नंबर दे ही देते हैं. $75.72 ES एक्सपेक्टेड हाई के ऊपर वाले रेंज से पहले नहीं लेगा. 75.70 कर लें जी. चलो जी लिख देते हैं ES का भी 75.70. Yeah, sorry, I can't not have, comments on TikTok. Just too annoying to deal with trolls. If you don't like it, you can move up. But all right, gets too many. How many electronics? कितने पैसे बना चुका हूँ जी? गुड क्वेश्चन. एक सेकंड में वेट करें. लाइव में बताता हूँ. लाइव में अभी तक बने हैं जी कुछ रात के, कुछ अब डाल के आगे पीछे. लाइव तो नहीं है, सॉरी, ये वाला लूसिड के डायरेक्ट में. एक
Let me see something. I was supposed to do something, which I forgot. Q&A के लिए वेट करें. मेरी पर्सनल स्क्रीन ट्रेडिंग व्यू पे बन जाता है यार, उसमें एपीआईज नहीं खुली हुई. ये प्रॉब्लम है भाई. लाइक सो बना रहा हूँ लेकिन ट्रेडिंग व्यू के एपीआईज का इतना मसला है. Of course it's not working because I'm copying the goddamn wrong thing. हाँ जी बिल्कुल जतिन भाई. मैं वेट मैंने ऑर्डर लगाया है 249 पे जी. So yeah, I'm waiting for 249 somewhere around. Mid-band first pullback kind of यहाँ था. Let's see. Mid-band 3020. Yep.
पिवट का वेट हो रहा है, अगर बाइंग हुई we'll see. ES का भी पिवट ठीक है 70, अभी तो वैल्यू एरिया के अंदर से वापस आ गया, वैल्यू एरिया का बॉटम और पिवट करीब करीब में है. ये देखें जी, हमारी किस्मत थोड़ी सी टेलीग्राम यहाँ से गई है. ये देखें, oh my god, that's almost 250 पॉइंट 194 से आगे. पिवट पे रुकना चाहिए आई बिलीव. नीचे है, लोस क्या है मेरे पास, 706 है नाइट का लो. तो अगर पिवट को तोड़ती है तो मुझे क्या मिलेगा, या आई शुड गेट समथिंग 850. पिवट 850 से 860 के दरमियान में पिवट पे रुकनी चाहिए. I'm a short type of a guy. I prefer short trade, meaning I'm betting against the market trend. Always, I'll prefer short over long. It's panic selling. 9-10 for 10 points. यार, I know नाइट का हाई है, लेकिन अब बड़ा बैठे ना. मिड 938 से आपने लिया जी, वेरी गुड. 15 मिनट के मिड से आपने ले लिया. कंग्रेचुलेशन जी शबनम जी, यू आर बैक. इतना सही काम है, पता नहीं क्यों घबरा रही हैं. आप लोगों को जितने ये चार्ट पढ़ने पता है, हमें तो उसका 5% भी नहीं पता. You guys are the lucky batch. हम सब आजकल पढ़ बहुत ज़्यादा चाट रहे हैं, फ़र्क ही इस तरह एक्यूमुलेट पॉइंट होते रहते हैं. दैट्स कॉन्फिडेंस आ जाता है जी. एनफ अकाउंट मैंने भी उड़ाए हैं, कोई बात नहीं, आ जाएगा. पंडित उड़ाए लाइव, आप लोग तो लाइव वाले हैं. anyway let's see. मार्केट ऑफ कोर्स ऑल द टाइम अपॉर्चुनिटी देती है, सिर्फ आप देखिए.
Did my computer just shut up? My machine just stopped. Seems like. Disconnect. Okay, we're back. बिल्कुल मिड से वापस गई, बिल्कुल मिड से, हाई लो मिड, तो मिड की लाइन So I like markets like this today. It does actually give me a retrace. The fear is always climbs on top of R2, sits until 4 o'clock, then comes back after 6. Oh, incredibly stupid or annoying ho jata hai. So let's see. So I moved my order to 249. Use Pro or Flex. Pro is 1-day pass. And Lucid Pro, you can pass it in 1 day. And Flex, so if you want to pass it in 2 days, go with Flex. Otherwise, same rules. आ रही है जी पिवट के पास. Get ready. 850 से 860 में इसको कुछ ना कुछ तो हमें देना ही चाहिए. Let's see. Copiers, fix the copy.
And congratulations to Spain for winning the World Cup. तीन सौ पॉइंट के मूव वापस since 1 hour 9:30 to 10:30 almost. Nine oh seven. Back to R1. लॉन्ग पिवट जी डैन भाई अराउंड 850 से 60 पे जूम पे शेयर कर रहा हूँ 850 से वो लगाया हुआ पिवट पे लगाई हुई है प्राइस करीब गई थी ऑलमोस्ट 907 से सो आई वाज वेटिंग 850 कम ऑन वापस जाओ I did this guys ले रही है जी 9898 नहीं ठीक है 5 पॉइंट आ गए बस डन जी आपके 10 पॉइंट आ गए 15 पॉइंट आ गए अपर रेंज ऑफ R1
Just trying to give options for Zoom so you guys can participate rather than write questions because I can't read. So let me see if I can make somebody co-host. Equal highs, you should look for 30, 60, 240. That's the best. Now I can see the questions here on Zoom. Short ASG 249, 250 to 260. That's the plan. We just sit and wait and watch. How's my camera's angles? 1 second. Oh man. This is number 1, cam 1, cam 2, cam 3. Gana bhi lagi हुए हैं, TikTok भी चल रहा है. How can I do picture in picture maybe? Let's see, cam 1 to 2. If I do picture in picture, cam 3, picture in picture. So this becomes my 1 के साथ. So if I go 4, which is 1. So 1 is being picture in picture with everybody. Okay. 3 maybe. Okay, but I would like to do this way. This is 3, this is 4, this is 2. 2 becomes 1.
guitar picture in picture. Okay, good. Two guitar picture. One guitar picture. Good. Let me see if I can push this feed to this. I need to get this feed. Okay, let me see. Might as well walk around, do some setups. HDMI out. So this HDMI has to go to this HDMI in. I'll be right back. Okay. क्या प्राइस है 984 coming down. Right now it's in R1. No, अभी नहीं कुछ. Come on. Too many cables. Looks like a studio here. Oh, that's a pain in the butt now. That is annoying.
I gotta bring a content there. See, benefit of being at home, I don't have to wear professional clothes. The market doesn't care how you look, cares how you trade. Beautiful. Cables. The game is rigged. Of course, the game is rigged. The game is rigged.
This no signal. Come on, man. Don't be like that. Give me a signal. हैप्पी की लाइव स्ट्रीम में चेक करता हूँ. Why don't you go and it's nothing. Back above R1. All right. Yeah, buy is still pivot. Exactly. And short is still 260, 250 to 260. It's the only thing that sorry guys, if my live gets interrupted, I'll be right back.
What do you think before?
All right. Somewhat we got some results. Come on, man. Very close. 880. I got that. Come on, man. Came as close at 873. Very close to it. Not yet. Too close, but too far. Trying to be as possible.
right, so still waiting. What's the price? Did not go to 850. So 850 was my entry. Waiting for the price to go to 850. A little bit of TikTok you guys got to see everything. $25, $860, $850, somewhere from $850 pivots. $850 to $860, we should get something.
All right, shot back up to R1. Next candle at 11 o'clock is open, so let's do some math. It's been testing between R1 and pivot for a long time. In my opinion, now it should definitely stop at somewhere around 900 zone again. Before it goes to like 110, it will test the high again. It should. So before we get to 240, it will definitely stop somewhere around 29,100, 90 to 100. It should stop. The morning spike. So R2 upper range and R2 lower range, it should be respected once again. Should. So yes, the 29,110 should be okay. Look, it made 60-minute equal low. Exactly equal low on 60 minutes. Now it's going back.
So I'm going to bring it down. So I brought my order down to R2 around around 98, where I had placed my order of yesterday. There is a 60-minute equal low sitting here at around 91. Down to 90. So 29,089 resistance. 29,089 because it's pushing up from 873, which is our pivot. It should stop around R2. First, it has to cross R1 and a few other numbers. So my buy has come from, my sell has come from 260 down from 190 to down to 90. So I've lowered it around 260 minus 89. $171 I brought it down because of the swing that came down to 319. Let's see what happens. Because 260 is still okay, it's still safe, but it's way, way far. So 29,090 minus 28,873. It's $217 to move and waiting to go back up. Around $200.
the mic so much. That's a good comment. $900 में भी रुकेगी अभी तो बहुत हो रहा है 29,000 320 point की move upper area of R1 so it should stop here no. खड़ा है heading to Ninja Pivot 9,005 9,005
Sorry. Music problem fixed. I think maybe it's the fan that's too loud. What am I waiting for? I'm waiting for the price to hit at least the high of night. 100 points back up from here, and then I'll decide. 29,089, let's say. So inside R1, R2 slightly, so from 80 to 90. So from 80 to 90, it should go somewhere. Yeah. I'm now truly waiting for R2. In ES 7573. Somebody raise hand, or do I give them the mic? I think instead of raising hand, if you could just click Q&A and type, I'll give you the mic.
I currently have an issue where I see the price on the DOM moving, but my charts are not moving. Just saying, it can happen. It's fine on the Zoom. Come on, what can I do about it? So 22 went to 31. My order is somewhere around 89.
Yeah, sorry, I'm not speaking yet, so there's nothing to hear. Waiting for R2 for NASDAQ, slightly above 80, below upper range, so 80, 80 to 110, but waiting for 80. Come on, equal high, 15 minutes, equal high, 30 minutes, but push a little, push back, go make it R1 as a support and go back up. Photo आपने भेजी है, correct. That's the high, 75.52 London high, and London low is 74.91. Correct. See, you have to look at night high and low,
London high versus it's after 12 or before around 6. Two different numbers will come. So you can measure, see 75.52 is London high and London low is 91, correct. And, but if you look at NASDAQ is heading to our R2 soon. If you took 190 and you took plenty of points, you should be done. But the next number doesn't come that fast for NASDAQ, especially the swings are like what 400 swing this way, 320 this way. So I'm waiting for R1, R2. Sorry, I'm waiting for R2. ES is inside R1 at the moment. Come on, man, only 50 points to go up to 86 and give me something. That's why I moved the con button. Type to speak, I'll turn off the music. No problem.
What's Rick's name? That tomorrow one. Going, see the 29,000 already. Wait, wait, wait.
52, coming close to our number soon. $66, almost. Very close. Very close, but very far. Waiting for my R1. Keep seeing R1, R2.
Yes, I'm waiting for 80 to 90 is okay. वो ठीक है जी चलेगी रुकेगी cable is broken cover 62, 63, come. All right. Order filled. Come on, pick up something. Give me something now. So far, no points. Break even. Come on, slow down now. Fall to the up. Come on. अभी नहीं आना. Good. Then I does करने जाए. Let's see. Which one do we got? और कितना जाना है? 94. Night high की तरफ जानी है. R2 के ऊपर range. Give me like 1 or 2 points, but not much. Night high की तरफ जा रही है. No, still that kind of cut a little bit too early. Maybe right around here. 110, maybe around here. Come on, upper range. Shouldn't break the upper range of 110. Night high. It's coming from 873. Let's see. How does it work? Camera.
12 o'clock candle goes into a spike there. So a 4-hour candle gave us a bit of spike. Down like 10 points. It's against me 15 points at the moment, still holding. Should have waited because 12 o'clock candle open and that's where the spike came. 25 points. Entered, maybe somebody entered 110. No, still wants to go back up. So if you haven't entered, wait for 131. If you haven't entered. If you've entered from 110, it's doing the night high at the moment. Giving you a couple of points. I've entered slightly lower. Some entered 95, some I entered 80, 89. So you entered 110, you're done. The night high. Gives me 30 points so far. Yeah, I'm not worried about it. It's moving the trade. If you haven't entered, wait for 131. If you're done 110, you're done. From 80, from bottom range, it didn't give us any points. So it should come down to at least 50. It's dropping. Now it's slower. It's a bit slower than we expected. Where's my phone? Hello? Hello? Sorry? Yes, hi. Yeah, sorry, he says not home, sorry. No, sorry. Okay, no problem. Bye.
So 110 trade is done, the night high trade is done. 90, we're about almost at break even. That's fine. Almost at break even. Let's see. So if you took 110, your 20 points are done for you. Upper range. Here we're slightly green. We take. If you took a your break even, it's up to you. You want to get out or you want to hold? It's up to you. The 90 trade. But actual number above now you can test for the night high 194 or go to 260. You can. It's up to you. I'm at a break even at the moment. So wait for 260. Wants to break 110.
I got stuck in R2. It's 12 o'clock. Should come down to at least 48. 50 points. Came back up 144 points. See, after 12, no, it's not instant results. Retesting 110. Guys, should come down to at least 50. Now, wants to see if it's going to make R2 as a base and then climb up, or is this good enough resistance? So right now that's the price struggling. Let's get PMS close to pivot. Because it's lunchtime, everything. If you're done for the day, call it a day. And the next number to still watch for is 260. So from 250 to 260, it should be here. So 190 we did, 250, 260, and a few others. Let's see. Price has no energy anymore. Exactly at 12 o'clock. Now they could hold this trade for long until 4 o'clock and then take it all the way up to 260, but let's see. If it goes against 260, 250 minus
3, that's 167 times $2, $334. Okay, no problem. Average in between. But it should come down to at least 50 and then go back up. The bottom range, 57 to be exact. 1 minute mid-band. Hello? Hello? Okay, मैं देखता हूँ. Okay. 130 is difficult जी. 120 से चलेगी. आप वेट कर लो. अगर नाइट का हाई लेना है, लंदन का हाई 194 या 250 ज़्यादा सेफ है. इक्वल हाई पड़े हैं. नाइट का लो पड़ा है. सॉरी 260 पे. 250 से 260 का लीजिएगा, उससे पहले नहीं. Again, giving you an opportunity to break even. Let's see. Come on, baby. On the नीचे. Okay, we'll re-enter at 260 at a bigger lot. All right, आगे price आगे. See, boom, man. इंशाल्लाह यहाँ से कहेंगे वहीं से प्राइस मूव होगी यार. थोड़ा सा पेशेंस रखें. No problem. Now I will move up to 260. ये ट्रेड तो बंद हो सकता है. आपके पास 15 पॉइंट मिल गए हैं और भी खींच रहे हैं. मैं जो एग्रेसिव ट्रेड कर रहा हूँ उसमें तो बैठा हूँ. जो जरा कंजर्वेटिव ट्रेड से वाडा वगैरह के उनके मैं 5 पॉइंट का टीपी के बाद निकल आया हूँ. तो इट्स ओके. वाडा को जरा थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ. एंड देन वंस उधर मैंने उनकी एटीएम लगवा दी है 5 की. जाएगी ये लंबी जाएगी. Man, see, this is how easy it is. If you just know, you know. और माइंड चेस की तरह है. आप अगला मूव प्लान कर लो. क्या हो सकता है जी? अगला मूव हो सकता है मेरे अगेंस्ट चली जाए. कितनी अगेंस्ट जाएगी? हम क्या करेंगे? एवरेज कहाँ करेंगे? इस ट्रेड को मैं बंद कर रहा हूँ. ये आपका ग्रीन हो चुका है. इसको मैं बंद कर. लंबा भी बैठ सकते हैं लेकिन कपल ऑफ टाइम्स. जब एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है तो है भाई. मैं टिकटॉक पे देख नहीं रहा क्योंकि वहाँ पढ़ नहीं सकता. मेरी ऑडियो वीडियो ठीक है. जस्ट गिव मी थम्स अप अगर कोई टिकटॉक पे देख रहा है. रीजनेबल क्वालिटी में आई कैन सी. मेरा कैमरा डिफरेंट लगाया मैंने. टिकटॉक देख रहा है तो कंग्रेचुलेशन अरुण भाई. मैं आपको पूरी कोशिश करके अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन से एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड नंबर की कोशिश करूंगा. ऑफ कोर्स 100% नहीं है लेकिन आज के नंबर हमारे रीजनेबल हैं. थैंक यू. सिर्फ आपको ना वेट करना पड़ता है. नैस्डैक का ये सबसे मुसीबत होती है. मैं जरा 189 से 110 ले लेता तो. लाइव स्ट्रीम पे ऑडियो वीडियो आ रही है. जूम पे सिर्फ मेरी स्क्रीन आ रही है और मेरी. अब इसमें 1 माइक्रो है तो आपको $10 मिले हैं. अगर आपने 110 से खींचा हुआ है तो जाए ना, जाने दें इसको. 60 तक बैठ सकते हैं. बहुत अच्छी लक हो गई तो
अब मैं 260 पे बैठूंगा। अब देखें ये एक जो जिनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वाडा के लिए, उसमें मेरे पास अब मल्टीपल फ्रेम्स हैं। रात को 8 बजे ट्रेड आ जाए, सुबह 10 आ जाए, रात के 11 आ जाए, आई एम हियर नाउ, आई डोंट हैव टू। अगला ऑर्डर आपको लिए लगा देता हूँ मैं, 249 पे जाके ऑर्डर लगा दिया मैंने। और बाइंग करनी हो तो वेट करें, सॉरी। तो हमारा कंपनी कितने पॉइंट मिले जी? 50 पॉइंट मिले। अगर आपने 110 लिया तो आपको 40 पॉइंट मिले, 89 लिया तो 20 मिले, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। नैस्डैक सिर्फ और सिर्फ मैथ से मूव होता है, कोई इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जाने दें 250 पे जाने दें हम इसको, इससे पहले कुछ नहीं करना। गुड, थैंक यू जी। गुड, प्लस से 15 पॉइंट, क्योंकि री अटेम्प्ट थी। WADA stands for We All Deserve Us Amazing. It's a great, real lifetime student couple that went to Florida and developed an amazing technology. And I'm just testing it. And it's an AI-based system where Claude trades for you, but they had a bit of a hiccup, so they asked me to take a look at it. Because if Claude says an entry now, I will approve it, or like I will manually override it. There's no, the Claude says, all right, it's the best possibility. Because before, when they launched, it was great, but it should come down. Okay, इधर तो पैसे बने हुए हैं, मुझे दिया भाई किसी जगह मैंने पैसे अकाउंट डाला हुआ है। This is good when you forget कि कहीं ना कहीं ट्रेड खुला हुआ है। Awesome. All right, Mike. बोलो। My wife has brought me breakfast and lunch. Oh, no, you can't come on the camera. Camera इधर है भाई, इधर आओ। ये है कैमरा, आ जाओ आ जाओ। अब आ? No, no, it's only facing this way. कैमरे के पास सामने नहीं खा रहा यार। No, no, ऐसे। Water. Okay. All right. Hey, this is the benefit of being at home. I can, उधर हमारी अम्मी थी ऑफिस की, माजिद भाई, 3 साल उन्होंने हमें बड़ा हेल्प की। ऑफिस की मामा माजिद भाई थी। चलो जी, 88 वाला भी निकल आया है ट्रेड से। हाँ, वेट करेंगे, आपको पैसे बन जाएंगे। $15 पॉइंट बने, 56, 20 पॉइंट। So if you want to know more about it, after a couple of months, let me double check. Yeah, it's this camera or this side. Huh? I don't know. देखें जी, वो कितनी आगे जी। ट्रेन कर लें तो कर लें, नहीं कर रहे तो डन। आप खुद से ट्रेड अगर करते हुए घबराते हैं या पैनिक हो जाते हैं तो हमारे साथ ज्वाइन कर लें, लेकिन जाएगी। हमारे मैथ 100% नहीं है, लेकिन 87% ठीक है, तो A+ में हो जाता है।
Sorry, what is it? My bad. Not A plus. B plus. We are okay. B plus में भी पैसे बन रहे हैं. It's not a big deal. So 50 तक बैठे थे जो लोग निकल गए हैं. Congratulations. कैमरे पे बैठने के लिए आपको डिलीट होना पड़ता है. आई डोंट नो, इसलिए मैंने इधर कमेंट्स बंद किया हुआ है. जो यहाँ का कचरा टिकटॉक पे आके ना ट्रोलिंग शुरू कर देता है. इंटरनल तो मैं म्यूट ब्लॉक कर सकता हूँ. तो ये क्योंकि पब्लिक स्ट्रीम है, यहाँ मुझे आपको जवाब ही नहीं देना. अगर आपको इतना लिखना है हमें जाके फ़ोन पे लिखें. हमेशा मैं आप लोग, अगर आपको फील होता है कि ब्रेक इवन आ गया एंड यू वांट एग्जिट, एग्जिट. यू फील लाइक कि आप होल्ड कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, तो ये जो नंबर्स हम देते हैं इसके अंदर से 20 एक पॉइंट तो आ जाते हैं. तो 190 का रात को हमने दो नंबर 74 मैंने खुद नहीं दिया, लेकिन आपको ऑल ग्रीन है जी. कंग्रेचुलेशन जतन भाई, ऑल ग्रीन, नो प्रॉब्लम. मैं कल से आपको जूम की भी दूंगा एक्सेस, ताकि आप उसके मॉडरेटर बन जाएं, ताकि ऑफिस में मैं ज़रा कॉल लेना. हेलो जी, वालेकुम सलाम भाईजान. अल्लाह का शुक्र. ठीक है सर, ज़बरदस्त.
I know मैं भी अपनी एंट्रीज मुझे ठीक है मैं जरा थोड़ी सी टेस्ट कर रहा था दो चार चीजें look at oh my god it went down 960 amazing जी जी मुबारक हो जी जिसने ट्रेल किया उसने ट्रेल कर गया जी वेरी नाइस congratulations जी if you took it you took it मैं पूरा ट्रेड लूँ फिक्र ना करें जी अभी तो ज़रा पार्टी शुरू हुई है डोंट वरी मैं थोड़े से एक दो दिन एक चीज़ को टेस्ट कर रहा हूँ फिर क्लाउड को हम आंसर कहेंगे भाई पूरा ट्रेड लो और ट्रेल भी करो कोई बात नहीं we'll do it sorry guys सॉरी मैं उधर उठ के गया और 150 पॉइंट गिर गई इट्स ओके नो प्रॉब्लम वापस चलेगी जी अब 260 पे हम नंबर लेंगे जी बैकअप जितनों कहते हैं स्टॉप लॉस लगा लगा के 118 माइनस दिस इज द वेट आई वाज वेटिंग फॉर के इंस्टेंट ड्रॉप आए तो भाई 5 1 मिनट ट्रेड में फंसा लिया था उसने 260 में मैं लंबा बैठूंगा नो प्रॉब्लम क्या नंबर है सॉरी 249 से सी वहां पर अब निकलो घर आओ ड्राइव करो 2 घंटे ऑफिस जाने में 2 घंटे ऑफिस आने में जुड़ जाओ यार फिर वहाँ हॉटस्पॉट के मसले हैं और बिगिनर बहुत है ये हमारे वहाँ पर एक थोड़ा सा स्लाइटली इशू है हियर today I save time going to the office and coming ये स्क्रीन अब ठीक है टिकटॉक वाली एक चीज यहाँ लिख दें यार इससे पहले कि ये रिपोर्टिंग वाले शुरू हो जाए बेवकूफ लोग
text plus I have to write not financial advice, educational and informational and entertainment. लीगली अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. There you go. That covers me legally. अच्छा जी, somebody raised their hand. यार मुझे क्वेश्चन लिख लें आपको, फिर मैं माइक दे सकता हूँ. एवरेज 100 के बात करनी है जी, अगर 240 पे नहीं जाएगी जी. 240 लाइक यस्टरडे का लो है. यहाँ पर हमारे अगेंस्ट कितनी गई थी? 90 से. अगर 110 लिया तो अगेंस्ट गई ही नहीं ना. 110 में अभी तो कितनी गई थी अगेंस्ट? अगर इफ यू टुक 110, 1 सेकंड, अभी 110 लिया किसी ने तो 8 पॉइंट अगेंस्ट गई. अगर 90 लिया तो 10-12 मैंने -$50 दे कितने ज़्यादा 50-55. तो रचना जी और संजय भाई, अगर आपको कोई वाडा, मैं मुझे नहीं मालूम कि आपकी क्या प्राइसेस हैं कुछ है. मैं तो आपको पता है कि लीड एनालिस्ट के तौर पे हूँ, तो आपका फ़ोन नंबर मैं सारों को दे रहा हूँ अगर किसी को ज़रूरत है. एंड ये कैसे चलता है, सो आई विल प्लीज़ गिव हर ए कॉल, सो मेक माय जॉब इजियर. ऑडियो शायद आपने ट्रेड करवाएं लोगों को. मैं लाइव स्ट्रीम आपके सामने बैठा हूँ. मैं कौन सा दुनिया से चला गया हूँ? मैं ऑफिस से गया हूँ और आपको पता ही है रीज़न क्या है. I can focus more and give like an entries थोड़ी सी rock solid दे सकते. I know. They're missing me at the office, but it's okay. I don't have this kind of luxury to. उधर भी हमने पहले बहुत सोचा, should I do this? माजिद भाई वाले रूम में चला जाऊं, मिडिल में रहूं, फिर उधर मेन पे तो, या ट्रिनिटी के अंदर 4 ऑफिसेज हैं वहाँ चला जाऊं. एंड आई सेड नहीं, हमने इसको हम
बैक टू R1 पिवट अभी भी ठीक है जी पिवट पे रुकना चाहिए 850 पे रुकना चाहिए so 975 है 100 more it went as low as 873 coming fast look at the swings today my god
That's the only crap part about NASDAQ is you gotta wait. Entries do come, but I'm not a scalper anymore. Yeah, I did teach scalping for 5 years. Now my roles are let's do entries, that's support and resistance. $100 points more and we'll be at pivot. And frankly speaking, guys, I'm not a long guy. I'm always scared of NASDAQ just, exactly. So, because there's so many levels at the bottom, it is coming from 408. Not that I want to scare you guys, but it's coming from 118, 29, 118 minus 28, 855. That's $263 move, but that's good. So so the moment, how do I go online? What time? That's the question. I don't have a specific time. I would like, today was this like CPI, PPI, FOMC, non-farm, ADP stuff. I gotta be up by 7 to be able to see the range what Europe did. And then like yesterday at 6 p.m. we took a trade slightly. So शायद मैं कहीं short बैठा हूँ, no, not here, not here, not here, and not here. Happy के floor के भी results आने शुरू हो गए हैं. So, oh, market dumped because of 17 minutes ago they did say some tweet.
So if you have $1,000 live account, what should be your goal daily? $20 a day, $25 a day, $50 a day. Every $1,000 you should be making minimum, if consistently divided by $50 a day, if you make in 20 days, you will have your money doubled.
once again testing the mid 935.38 दोबारा मिड पे आ गई तो इस तरफ अब पिवट पे जानी चाहिए या S1 पे जानी चाहिए ये तोड़ के यहाँ ब्लैक कैंडल बने 30 मिनट पे नीचे आए I have feeling could be wrong पिवट से इसको वापस ऊपर जाना चाहिए और क्लोज करना चाहिए ऊपर 240 के करीब Do I have a number? Coming close to our number, guys. So definitely pivot पे रुकनी चाहिए, definitely. So from 860 to 850 is your range. 860 to 850. रात के 2 बजे ये पिवट के करीब आई थी और ये इसका रात का 2 का इक्वल है 845. सो 860 से 850 के दौरान में इसको कहीं ना कहीं पॉज देना चाहिए. You're up. Can you drop her, Zara, to Barry? Okay, ठीक है. बस नीचे yes कर दो ग्रुप में. Okay.
Yes, every Saturday I'm sitting at Trinity for from 1 p.m. to 5 p.m. Why pivot से पहले ही चली गई है? Which number? Why did you go from there? I always like to see why you went from here. But was sitting at 910. That's how you reverse engineer the current market. Doesn't make sense. Why 910? It's an equal low, 905, but still 30-minute equal low. Nothing is there. Body is open somewhere around 4 a.m. वापस ले गया जी. $100 points. Still, I'm waiting from here. So 859 is my order for near pivot. Let me refine it. I'll give it to you at 859 is okay. Yeah, pivot is okay. Should be okay. But if it goes to 240 and you are at 4 o'clock, wait till 6. So let's see if you have to go. I know some people don't have the luxury to sit like me that I am sitting here.
So there's two options. You can place an order. You can keep. I'll keep the Zoom on as long, maybe till 5 o'clock. But right now we're back in R1.
इधर है जी R1 में फिर testing audio testing on TikTok. Testing. Okay, that's good. That's better. All right, TikTok is back. I'm more comfortable shorting at 250 than buying at 850. How can I add a video here? I think I have something.
trying to make room for every inch of the space here. Don't worry, you guys can do other things and I'll alert you if you have a trade coming. Don't worry. That's my job. Keep Zoom on and then I'll alert you. So we did. Let me log this. What's up, Zara? Huh? I don't know. So if I look at since 4 p.m., so 4 trades, yes, 4 trades. 963.2 as well. So 963 was valid. 89 was okay. Yes. Surprisingly, yesterday I did the Zoom. 12 people were up with me. Hello. जी सर क्या चल है ठीक ठाक 100% सर वो बिगिनर्स का रूम था मुझसे ट्रेड नहीं हो रहा था सो नाउ वी हैव लाइक प्लस वहाँ पर एक फ़ायदा ये हो गया कि अब जतन 2 मेंटर्स को और तैयार कर रहे हैं ना सो दैट्स व्हाई द रीज़न नो मैं ऑनलाइन तो बैठा हूँ उसमें क्या नहीं मैं जूम मैं आज एक सेकंड जूम टिकटॉक टेलीग्राम यूट्यूब सुपर एरिया 4 जगह तो 5 जगह तो भेजना देयर यू गो तो और सुनाए ठीक है उधर वेरी नाइस वेरी गुड वेरी नो नहीं होंगे मैं सैटरडे का सेमिनार है सिर्फ ये मंडे टू फ्राइडे जो है ना आई कैन डाउन डू 23 आवर्स अ डे एनी टाइम क्योंकि 3 घंटे ट्रैवल टाइम था ना ऑरेंज से निकलो सीधा इधर आओ CPI PPI सारा इधर में सो रहा था so now I can do like straight from bed to the trading floor in 1 minute so I'm saving what 180 like minutes 185 minutes yeah bhai. Enjoy bhaijan no problem okay thank you okay.
And what is the goal? Ultimate, everybody has a vision, everybody has a goal. Get out of teaching and focus on trading. I've taught enough, man. I'm tired. 5 years. I don't want to teach anything. I just currently VADA is managing 2,000 times 25 times at least $100,000. So it's much easier to manage funds. To 906 आ रही है जी, speed आ रही है, speed 901 9. So what is the vision? 10,000 people, 100,000 people, million people, 5 analysts. That's all you need. Gone are the days of trading and learning yourself. Join a community, get your signal. That's it. Forget about how to teach you divergence, moving averages, Fibonacci boxes, retracement divergence. हाँ जी मयूर भाई, मैं पिवट का वेट कर रहा हूँ जी. सो जो हमारे पास 2008 से यूजर्स आए हुए हैं वो enough learn कर गए हैं यार. It's okay. It takes a full blown to start teaching what is MES, what is ES, what MNQ, FOMC. I don't have the energy for that. Easier for me to sit, maybe have Happy here, Jatin here, Majid Bhai, Tulip, 4 or 5 of us, and then 10,000 users, 20,000, 50,000 users. That's better system. Multiple people doing analysis. Teaching part somebody else can do, man. So that is where I'm focusing on. ये टीच करो, उनको ट्रेड सिखाओ, खुद ओवर ट्रेड कर जाते हैं, फिर हमें बांधी होती है कि भाई जी लॉस हो गया. ओ भाई किसने कहा था एवरेज कहाँ से करूं, खुद ट्रेड अभी आप लोग. And that is something you cannot teach. You have to experience it yourself. Unless you have discipline, I can't teach. 962 से फिर इक्वल लो लगाया इसने 2-3 दफा 15 मिनट का. So don't worry, we'll have 4, 5, 6 analysts sitting one day with 10, 20, 30, 50,000 people. It's not a big number. Beginners, Majid Bhai, intermediate, Tulip, advanced over there, Mr. Jatin, then over there, Myron. Happy is going to teach you advanced topics of NASDAQ. So you understand. So what Happy does, just telling you guys, the numbers, he taught me NASDAQ, by the way. I'm telling you, he taught me NASDAQ. I'm an ES guy. I studied 5 years ES. Some people study gold, crude oil. I studied. So he told me the other day, he's like, you got to start learning NASDAQ. So he taught me a lot of tricks and tips. And I'm thankful to him because 5-6 years ago, I took the ES route and he took the NASDAQ route. And he outperformed me. So, and then he finally said, you got to learn NASDAQ, which I did. It's okay from him. So any number. So he's the guy, if you want to learn how to extract numbers, he can teach. I just now take that knowledge and apply it
या पिवट पे आ जाए या 240 पे चली जाए। अभी तो मुझे 194 करीब लगने लग गया, उसके दरमियान में 110 फिर करीब लगने लग गया। सो बिकॉज नाइट का हाई हमारे पास है 192 193 एंड इस टर्म्स ऑफ बिजनेस यार इससे अच्छा कोई काम ही कोई नहीं है। आराम से बैठ जाओ, अगर लाइव में भी बनाते रहोगे तो लेट्स से कोई मिनिमम जॉब भी कर रहा है 100 की, तो यार 100 तो बन जाता है, इतना बुरा हाल नहीं। मैं अपने लूसेड के रिजल्ट्स भेज देता हूँ। One day all of you should have the luxury to sit like this and trade from anywhere. And if you're a good mentor, you can learn our system and reteach. Yeah, you can reach out. You can be part of super areas and we can send you lots of students to teach you, to teach. Best prop firm. Lucid number one, Take Profit number two, Tradeify, Apex. These are all the codes that I gave you. These are the top 5. Pick end of day. That's good. End of day. Don't pick intraday trail. It's going to ruin you in terms of psychologically. So, okay, back to R1. What a speed, man. Nice. 77 points one way.
27. All right. R1 did again give it beautiful, even though it gave, I did not take. Two o'clock candle, almost 2.5 minutes.
Sorry, getting tired. Not taking any areas, just saying maybe 194 retest, but nothing before. Sorry, I have to keep the music on, otherwise I'll fall asleep, right? So whenever I'll speak, I'll turn off the music. But if I have nothing to say, I'm just gonna leave the music on.
ओ भाई बहुत ही पुराना लग गया है, क्या हो गया है? थोड़ा सा चलो ये ठीक। थोड़ा सा तेज चले। बन गए। I gotta bring a bed here, man. This is too uncomfortable. Fourth time it tested our time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 time. This since this morning, 7 time it tested our one. बोतला भाई नींद आ रही है, तेज करो थोड़ा। तेज थोड़ा सा। So people ask me, what do? I do nothing. I just sit and I watch screens. That's all I do. वालेकुम सलाम मलिक साहेब फ्रॉम यूएई। अच्छा जी, मैं इसको रोक के ना, अब मैं आपको वाडा के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि वाडा है क्या, मेरा क्या रोल है। सो पहले अर्ली किया था थोड़ा सा। मलिक साहब, इस तरह है कि मैं ये काम कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ 5 साल से, और ऑफ कोर्स विन लाइफ टाइम के साथ हूँ, सुपर एरियाज के साथ हूँ, सब कुछ ठीक है।
हमने क्या चीज़ एनालाइज की, हमने सेमिनार किया आपके सामने, यूएई में भी आपके सामने सेमिनार किया है, इंग्लैंड में किया है, कैलगरी में, यूके में, सारी तरह। What's up? Come on in. I'm on live stream. एक सेकंड वाला सब इन, हाँ जी, what's up? Hi? I can't pause it. It's running. Sorry. Nobody can see you. Cameras are there. They can hear you, but it's... yeah. Don't... Yeah, I'm calling. I know. Okay. No. Okay, wait. Okay. Yeah, man, how far? Okay, Zara, 10 minutes. 10 minutes. Yeah, but नहीं, उसको शायद उधर कहीं और लेके जाना पड़े, okay? Just make sure you spend some time. He's ready to just talk to Zara, okay, please. Okay, bye. All right, so let me explain. So we do a lot of seminars, and what we find what we did in Calgary and what we did in Vancouver is around 300 people, 250 people showed up to our seminar, and they did it. Now, quite a few signed up, some for 1 month, some for 3 months, some for 6 months, some for a year. Great, it's perfect. Now we got to make sure that we train them with our software and analysis. So I have different, like, people from zero knowledge all the way up to people who understand what a moving average is, right? So, and we find it very difficult to train people who have no experience. So about a month and a half ago, I was introduced to this company, WADA Capital. Vada Capital. So sorry. So I was introduced to them, and what they said is they do account management type of a thing, automation, Claude AI, and it can send a signal. I tested it for about 12, 15 days, and I'm pretty happy with it. Then I said, you know what, let's do a first batch for people who want to be part of it. So I think 25 people signed up. It's an expensive program, more expensive than super areas, not related to super areas. It's not what happened was I put in my accounts too. So day one, it hit a stop loss of, I think, $200. So they programmed it with Claude. So automatically it would $200 बन जाए, लूज पे खुद ही हो जाएगा और $100 पे प्रॉफिट हो जाएगा. ठीक है जी, बहुत अच्छा है, गुड जॉब. तो ओके, डे वन 200 तो नहीं, 186 पे स्टॉप आउट डे हो गया. ओके, स्टॉप लॉस लग जाता है, मार्केट मूव हो जाती है, एनालिसिस गलत हो जाते हैं क्लाउड के, नो प्रॉब्लम, because there's the language model has to train so much. 1 minute all the way up to daily chart, 1, 5, 15, 30, 60, 240, and 1440, and then support and resistance, and then 15 different types of method. Which method are we going to go with? No worries. So end of the day number 2, the risk management settings just did not get executed, and they were down, I think, $1,000. So a $2,000 account on day 1, they hit minus $200, and day 2 they hit minus 1,000. So then, of course, I am in the advisory committee of these people. It's a big corporation. Company is US, and they're our students who developed it. And what happened was that they called me in, and we had a meeting, and we said, okay, if we can do it so AI can think to take a trade, however, somebody human can intervene and say approve or deny. Let's say overbought trade, and you're considering 60-40 overbought RSI, 40 ticks offset. So okay, rather than it take it automatically, humans should be saying, okay, should I take it? So I did it last week, and today is my day 1, and now I've improved a lot.
So today, for example, I approved the entry, and entry was at 89 or 90 or so. So it showed me a negative $50, and then I have a 5-point TP set. It will close it. Had I not set it up, this was a $250 trade. That's fine. So what we see is the ahead of the curve is people who want to not trade. Some prop firms are working with us to make this a reality. So, because the last thing is the moment if I'm here and I can take a trade, you're gonna be alone. Maybe if I'm not here tomorrow, I'm on a vacation, I'm on a holiday, and you can't see or read my analysis, you're gonna make a mistake. And because NASDAQ moves, like look at the swings today, right? It moved $784 so far, and then it moved $485, then it moved 309. So you could really destroy even with the ES+NQ, right? So, but if you, so 5 analysts can sit, and myself and our team of super areas, 5 analysts can sit and make a decision, and 10,000 people are happy, 20,000 people are happy, 100,000 people are happy. The biggest issue is for people to manage their own funded accounts, right? So I'm not trading for anybody, but I'm controlling the signal somewhat in terms of, so right now the signal is manual. I am saying on my Zoom, go ahead, and I am planning this should be a good resistance. And every influencer does it the same way on TikTok or Instagram or Facebook or YouTube is they open up a live channel, and New York session or London sessions, they are trading. But what happens is when you even take the learning part out and you say, all right, I care about earning portion. So if you're interested, I can send you their phone number. You can talk to them, register yourself. However, they're not taking new clients at the moment because the current clients. So where have I come in? My job is to make sure whatever AI does, I have somebody who can override the Claude decisions. And the second thing is where I'm going to come. So, and I have personally given an assurance and insurance that if Vada guys blow your accounts, they'll refund you. So just go upstairs. So this is what this thing is. Hopefully it makes sense. So after maybe a month and a half, I'll officially promote it. Not right now. I'm just saying you can register, wait and watch. 1 month we should have some results, because that's the plan. Upper range R1 की चली again. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times. 8 times. 5 o'clock. So I'll set you up. Yeah, just move it inside here. Just all this stuff, move it inside. And at the office, I can't have luxury like this. चाय बनी हुई है, म्यूजिक चल रहा है, टिकटॉक ऑन है, उधर इतना म्यूजिक लाउड करो तो नेक्स्ट रूम में आवाज तो. Here I am the master of my domain. That's it. This is
this captain, थोड़ा सा इधर से रखना, मैं यहाँ से तो नहीं गुजर जाऊंगा, इधर इधर. I'm the master of this ship, captain of my soul. I don't have to answer to nobody. My daughter says this looks like a hacker's room. I don't. चलो कोई बात नहीं. So, only downside is you're gonna have to put up with the choice of my music. जो मेरा दिल है चलाऊंगा, शायद आपके टेस्ट का ये ना हो, but that's how I roll. Wow, look at the wallet. Look at the volatility, amazing. It dropped 50 points in a minute. Thank you जी, आपको मेरा म्यूजिक की चॉइस पसंद आई, लेकिन there's always 50% of the people will not like anything you do in life, so you can learn to ignore them. That's the way I move. Hamisha 50% will be always against you. So that's why I don't open comments on TikTok live. थोड़ा तेज करते हैं काम को. दोबारा मिडिल पे आ गई 935 मिड लाइन पे. लेट्स सी, इस दफा
तोड़ती है कि नहीं यार, किसी कोई डायरेक्शन पकड़ लो यार, कोई डायरेक्शन पकड़ लो। So this is 2 in 1. ट्रेडिंग एक है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, साथ साथ आपको म्यूजिक मिल जाएगा, थोड़ी टॉक शॉक हो जाएगी, रेडियो स्टेशन चल रहा है, इट्स लाइक आई हैव टू होस्ट फॉर like 8 hours a day, so I need to make sure that I have entertainment planned as well. Otherwise, it'll be rough, boring. Only thing is, YouTube won't monetize mine, which is okay. हेलो हेलो, ठीक है सर, रिलैक्स है, मैं तो फाइनली अपने स्टाइल से कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हूँ अपना शुरू कर दिया, एक मिनट, नो प्रॉब्लम। नहीं सर, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ जी,
हाँ हाँ उस तो एग्जैक्टली बिल्कुल नो प्रॉब्लम हाँ सैटरडे सर सैटरडे बिल्कुल बिल्कुल 7 और 1 o'clock नो नहीं नहीं ये कुछ भी नहीं है मैं वेट कर रहे हैं अगले नंबर 240 था हाँ जी नो प्रॉब्लम थैंक यू जी थैंक यू needs to break 873 before we do anything. 873 needs to be broken first before it gets to pivot because twice it tried 870. So again, we still got some time. So 70 plus 15 and then getting there. एडवाइस ईएस की मैं आपको बताता हूँ ईएस सॉरी आज ईएस बेचारी ना लवारिस की तरह कुछ हो ही नहीं पाया नाइट का लो क्या ईएस का इसको मैं ऐसे मूव करता हूँ एक सेकंड आपको ईएस के लिए भी कुछ करते हैं सॉरी जी एडवाइस तो नहीं है फाइनेंशियल एडवाइस सिर्फ ओपिनियन है वर्ड ओपिनियन यूज होगा एडवाइस नहीं because I don't give any financial advice.
हमारा नाइट का लो क्या है? नाइट का लो है 82। सर आप ये जो 60 मिनट पे बॉक्स देख रहे हैं ना, 90 पे S1 पे रुकना चाहिए। S1 पे 91, 7491 पे, वो 7470 तो बहुत नीचे है, लेकिन 74 75 आई एम सॉरी 7 बट का दिमाग मेरा खराब हो गया। 7491 ये फिब के बॉक्स के अंदर इट शुड गिव अस 7491, इट शुड 894 तक आई है। काम आन यार। सो 60 मिनट के फिब के करीब पहुंच रही है। नंबर है 7491। अब मैं डॉलर गैप आपको बता देता हूँ। सॉरी, इसको बंद करें यार। डॉलर गैप 7491 पे रुकना चाहिए, 60 मिनट के फिब के नीचे है। आई ट्राई टू गिव यू एज मैनी नंबर्स के साथ रीजन भी दूंगा, सर्टन में दूंगा, सर्टन में नहीं। सो ओके 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 ओके, लेट्स डू दिस। 7491 हमारा है वैल्यू। अभी तो वैल्यू एरिया से बाउंस किया है, वो देखें वैल्यू एरिया के बॉटम से बिल्कुल डॉट टू डॉट वैल्यू एरिया को भर के गई है। अब तो 7 और ये गई है 894 से। हमारा वैल्यू एरिया था 74। मॉर्निंग में हमने लिखा था यहाँ कहीं मल्टीपल 7499, यस बिल्कुल। देखें 75 पॉइंट दे गए वैल्यू एरिया से। पिवट से नीचे, पहले पिवट पे 2 दफ़ा रुकी है सुबह, अब 749। अगर आप वेट कर लें नीचे आने का, ये मिड बैंड 3020 का टच हो, नीचे आए तो आप लोग वेट कर लो अराउंड 92। तो S1 शुड बी ए गुड सपोर्ट, क्योंकि 60 मिनट में यहाँ पर 1 और 2 और 3 जो 4th टाइम S1 पे सपोर्ट मिली थी। बल्कि ये क्लस्टर सारा बना हुआ है 60 मिनट का S1 के करीब। तो S1 शुड गिव अस नाउ द व्हाट इज द डॉलर डिफरेंस। लेकिन आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा, बिकॉज आई कैंट सिट क्वाइटली। 2156 डिवाइडेड बाय 7, दैट्स $22 का फ़र्क है। फ़र्क बहुत ज़्यादा है गैप का। तो ये अपने ही चल रही यार। How can I mount this mic? I really like this mic. This is from, it's called the Rode Pod. I have the cables for it. I know. I have even all this stuff too. Maybe I'll do a Shure mic. I do have all this stuff. I have the Zoom recorders for each one of them. Then I have the cloud microphone filter. Okay. I used to do podcast, but I don't have. That's why I have all this equipment, audio video equipment. ये भी पहन लेते हैं। डॉक्टर नाज़दाक। She's laughing. आ जाओ। Why are you wearing a doctor's thing? This is to. Thank you. Okay. Hello. No, that's, come on, don't do that. Because you're underage. My video will get reported. Go, get out. Sarah, please get out. And are you wearing a doctor's thing? No, I'm not. That was just having fun. You can test your own stat. Hey, close the door. So, उधर ऑफिस में माजिद भाई ले आते थे, इधर घर वाले। अगला कुजीन आ गई जी, वाटरमेलन।
I'm like a radio station if you want to be tuned in. Clear. Yeah. जी अस्सलाम वालेकुम सर नहीं सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਕਰਾ ਦਊਂਗਾ 100% ਬਸ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ नो प्रॉब्लम थैंक यू थैंक यू ओके got me excited coming down 873 की तरफ लेकिन भाग गई 876 आ जाओ तोड़ दो come on dude give me something पहले आ नहीं रही होती फिर हमें होता है कि बस जी आ जाए तो आके रुक जाए और पैनिक ना कराए हमें या तो पिवट पे रुकनी तो चाहिए इससे नीचे S1 कितनी दूर है 100 पॉइंट दूर है ठीक है इट शुड बी ओके मैथमेटिकली कैलकुलेटिंग एक्टिवेशन 856 minus 756 100 minus ठीक है I'll take a risk and then do an average if it doesn't stop at pivot we'll look at come on यार 876 से चलेगा see पिवट पे रात को 2 दफ़ा रुकी थी सुबह 4 बजे रुकी है और 5 बजे रुकी है तो 870 तो तोड़ गई 868 आज आ जा इतनी थोड़ी सी तुम बस ES का ट्रेड हो चुका है ना 91 से नहीं 91 वेट कर 79 ES S1 के अंदर वो हमारे एरिया के पास आ गया ऑलमोस्ट 867 65 come on excuse me 64 61 59 come on pick up I got picked up on certain trades from 59 let's see पिकअप 55 पिकअप हो गया जी ट्रेड पिकअप हो गया 5 पॉइंट अभी तक मिले हैं लेट्स सी इफ वी सिट दस पॉइंट मिले थे अभी तक लिए नहीं मैंने
ग्रीन तो है लेकिन एनफ ग्रीन नहीं. All right, guys, trade is done. Good, excellent, beautiful, to the dot. Congratulations. 15 पॉइंट तो मिल गए हैं. Good. I'm done. Uncertain with बड़े जरा लॉट पे गया था उसको देखूं मैं. Yeah, I'm done. 20.80 जाने दो. Happy जी? Everybody's happy? Good. जाने दें. अब जरा हाई टेम्पो वाला सॉन्ग चाहिए हमें. Come on यार. अब किधर गया? दोबारा ही लगाते हैं. फैन. That was a good song. NASDAQ में तेरा फैन हो गया. ये ना कहना यार कि स्ट्रेट नहीं लिया. पैज कर दिया. सच्ची जबड़ा फैन हो गया. याद रहे सपोर्ट में थोड़ा सा आप अगेंस्ट द ट्रेंड खेल रहे हो तो नैस्डैक वो भी तो थोड़ा सा उसको जो पुश है ना जरा मिलती है लेकिन इन रैपिड ड्रॉप आता है. लॉन्ग में आपको डेफिनेटली टीपी के साथ निकलना है 20-25 लेकिन 90 तक गई थी. आपको 60 से 30 पॉइंट दे दिया यार. और इधर ईएस भी बेचारी खिंच खिंच के मौत की तरह चल ही रही है. स्लो स्लो यार क्या हो रहा है. इट्स ओके.
takes time, energy for to like, I mean, 150 पॉइंट के 150 पॉइंट के बाद गिरी है. So anyway, so our fourth trade, एक सेकंड में लिख लूँ जरा कि हमारा पिवट भी ठीक गया. आज 850 से 860 का था, 655 पे टू द डॉट पिवट पे चला है. 8 कंग्रेचुलेशन जी, वेरी गुड. देखिए यार, वेट करेंगे तो नंबर मिल जाएंगे. रिस्क उस वक्त लें जब कंजर्वेटिव आपको सिट एंड वेट एंड वेट. यहाँ बहुत बड़ी सपोर्ट थी. पिवट जो है रात को क्लस्टर बना हुआ है, 1 2 3 4 और 5 दफा 60 मिनट का चार्ट यहाँ खड़ा हुआ है. तो व्हाई वुडंट वी टेक इट? ठीक है, मैंने थोड़े से ले लिए. MES ठीक है, अब जाएगी, ऊपर जाएगी. अब हम 200, अब पहले देखें अगर, तो अब टाइम क्या रह गया, 3 बज गए ना सर. S1 एक सेकंड, मुझे जरा ना थोड़ा सा एक मिनट देते हैं. ओके, एक सेकंड में S1 से एक मिनट दीजिएगा, सॉरी, माजरत के साथ. कंग्रेचुलेशन जी, 74 2 पॉइंट आपने ले लिए. क्योंकि वहाँ ना सपोर्ट अच्छी बैठी हुई है. अभी भी ना वो कैंडल टाइम लगाएगी, 3 बजे वाली, शायद 4 बजे वाली स्पाइक कर दे. तो मैं अगेन शॉर्ट का बंदा हूँ, मैं पिवट तो ले लिया, गुड थिंग चल गया. ऑफ कोर्स नंबर देते वक्त वर्सेस आपका ट्रेड जिस वक्त होता है, आपका दिल उस वक्त एक्चुअल धड़कता है. बाद में तो बंदा काम डाउन हो जाता है. 20 पॉइंट के बाद एटलीस्ट आप, किधर गया भाई माउस, किधर गया, जा रही है पिवट से, लेकिन ना 50 60 70 80 देखें आ गई. वो थोड़ी सी एक दफा स्पीड पिकअप हो जाए, 1 मिनट का कैंडल शुरू हो जाए, 926 तक जानी चाहिए इसको. तो इसलिए जो लोग बड़े बड़े पॉइंट्स का वेट करते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ कि बड़े बड़े पॉइंट्स भी आ रहे हैं. शॉर्ट होता है मैं शायद बैठ जाता ज़्यादा लंबा, लेकिन लॉन्ग में आपको यार ट्रेल करो, क्योंकि अगर एकदम और एक डंप आ गया तो नॉट रेकमेंड. बैटरी खराब हो गई, क्या होगा, ये बंद हो गया. अच्छा ये वाला रॉन्ग माउस जी. ठीक है ना, 92 तक गया है, 60 से 30 पॉइंट दिए. इट्स फाइन, नो वरीज. It may go and retest pivot a couple of times. So अगर आपने नंबर अगला पूछा कि S1, यार S1 ना लें, निंजा का S1 ना लें, या ये वाला S1 ना लें. मैं आपको नंबर बताता हूँ, 765 706 706. एक सेकंड, मुझे जरा 240 को देख लेने में. 240 के अंदर क्या हो रहा है. हमने तो इलेक्ट्रिक ग्रिड बनाई हुई है, इतनी ज़्यादा चीज़ें डाली हुई हैं. डेटिंग ट्रैक के अंदर stands to the right side. नाइट लो जी, नाइट लो डन हो गया जी. नाइट लो, पहले S1 को स्किप करेंगे पिवट से, निंजा का S1 स्किप करेंगे और नाइट लो की तरफ आएंगे, विच इज अवर. तो 710 अगर करना है तो S1 को स्किप कर दें, और दोनों निंजा का और सुपर एरियाज का S1 स्किप कर दें, और डिसाइड करें 710 715 पे अगर जाती है. अभी तो ये 900 की तरफ जा रही है. सो जीनियस नहीं है भाईजान, मैं कोई पैदा नहीं हुआ था ये लेके, ये सिर्फ रोज रोज पढ़ के दिमाग, आंखें बूढ़े हो गए हैं. सो वैसे मैं ऑनेस्टली वेट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि, ऑफ कोर्स रॉन्ग हो जाता हूँ भाई, कई दफ़ा वहाँ रुकते ही नहीं है.
देखें कितना पॉइंट देके गए, 922-26 तक जाना चाहिए इसे। सिर्फ स्विंग ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम आते हैं एरिया के अंदर। 47 पॉइंट्स गई है वहां से। जीनियस हम है सॉफ्टवेयर राइटिंग में, ये हमारा स्किल है, ये हमारा गोल्ड मेडल है कनाडा को रिप्रेजेंट करने का, ये यूएस में। तो बूढ़े हो गए यार। ऑलराइट, दैट वर्कड गुड। तो यू जस्ट हैव टू वेट। आप दुनिया के और काम कर लो, और आपके प्राइस पे आ जाए तो वहां देख लो। So 7, you can say अब मैथ मेरा चल रहा है 194 का, कि अगर इसने 110 तोड़ दी, 194 की तरफ गई, और बहुत बड़ी स्विंग्स के बाद लेता हूं ताकि शोर शॉट लूं। 91 से आपको 4 पॉइंट मिले हैं ईएस में, इसको अब वापस जाना चाहिए। ये जरा नैस्डैक रीटेस्ट हो जाए 50 पिवट को, तो अगर नैस्डैक गई तो ऊपर, तो ईएस पे ऊपर चल पड़ेगी। आज सिंक नहीं है, $100 का गैप है। और नीचे आई तो मैं अगली अटेम्प्ट लूंगा जी नाइट के लो पे 700। दैट शुड गिव अस 240 पे भी इक्वल लो खड़ा है। 1 2 3 इक्वल लो 240 पे खड़े हैं, और सॉरी 60 पे, और 1 और 2 खड़े हैं आपके 715 पे। मेरी रिकमेंडेशन क्या है? सब हम लाइव, मैं बाहर आता हूँ लाइव। But अभी जरूरत, it's okay, I know I gotta put in something. No, I'll text someone she's there. No. No.
that's a little bit of a drawback. Once you are at home, you get to do retest हुआ जी, बिल्कुल pivot retest हुआ जाके. Okay, pivot retested and went back up. If a pivot breaks, then we're heading to night low. Pivot again breaks, then we're heading to night low. The night low, we will decide something. See, the next number is night low. It has broken. So 844 coming down. Let me see on Forex Factory if there's a dump somehow. 7 hour ago, nope, nothing yet. So that's why I'm not a big fan of long trades. Broke pivot coming down. Now 60-minute has your boxes. So it can stop. The ultimate number, by the way, if is your 610 ultimate number, but at 710 night low it will respect. So let me see, 6S2 bottom is a good number because we have multi support there. You have your S2 bottom, you do have your hello. I'm calling from the Sean Express. Are you ready for your interview with Shalini ma'am? हाँ जी ready है. जी सर, बस न्यूज़ खत्म होते ही हम आपको आने हैं, लेकिन आपको होल्ड पे रख दूं? ठीक है, no problem. थैंक यू सर, थैंक यू. हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई कंस्ट्रक्शन कम होने की वजह से आने वाले वक्त में कॉन्डोज की सप्लाई तेजी से घट सकती है. नॉर्दर्न ओंटारियो में इस वक्त लगभग 200 वाइल्ड फायर्स चल रही हैं, जिसमें से 57 पूरी तरह से बेकाबू हैं. कई कम्युनिटीज को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. फर्स्ट नेशन के लोगों को आज भी फ्लाइट के जरिए टोरंटो लाया जा रहा है, क्योंकि थंडर बे में होटल से लगभग भर चुकी है. उधर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्दर्न ओंटारियो के वाइल्ड फायर स्मोक को लेकर कनाडा पर नई टैरिफ लगाने की बात की. Yeah, so if I get scared, then I can keep it anything. And I can bring it to the house. And you can anything. Wait. Oh, it's Ethan? Yeah, it's okay. Okay. I can't call him. Okay, it's okay. Okay, मैं रेडियो पे हूँ. Go. Wait. Hey, you can't come in front. You can't. और फिलहाल वाइल्ड फायर स्मोक शहर से हट चुका है. हालांकि वेदर डिपार्टमेंट का कहना है कि इस हफ्ते Close the door. बारिश और थंडरस्टॉर्म ज्यादा और देखने को मिल सकता है. Close the door. सन एंड क्लाउड मिक्स के साथ हाई ऑफ 26. So night low का वेट करें जी. कल 70% बारिश और थंडरस्टॉर्म्स की संभावना है. वेडनेसडे को मौसम साफ रहेगा, तापमान 22 डिग्री तक रह सकता है. थर्सडे को खिली हुई धूप के साथ हाई ऑफ 26 डिग्री, जबकि फ्राइडे को फिर सन एंड क्लाउड के साथ
हल्की बारिश की Yeah. संभावना जताई गई है। फिलहाल मस्ती की रेलगाड़ी पर शॉन एक्सप्रेस के साथ भेजिए। आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी 715 पे ट्रेड लगा। मस्ती की रेलगाड़ी अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड और एडवर्टाइजिंग फॉर 416-569-7812 416-569-7812। Oh. टाइम यानी जीत और जिंदगी भर, और बहुत सारे हजारों लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर जीतने के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी हारते जा रहे हैं या जीत मिल रही है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं मिल रही। So well, to achieve that consistency in your earning, consistency in your great lifestyle, you need to go to Win Lifetime। 18 सालों से हमारी कम्युनिटी का बहुत ही renowned नेम है और वहाँ पर ट्रेडिंग और आपको सिखाया जाता है। ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। Joining us now on air is renowned trader and trainer from Win Lifetime, Rafay ji. Rafay ji, good afternoon. How are you? Good, very well. Good afternoon to you and your listeners. Ji, Rafay ji, can you hear me? Welcome. Ji, good afternoon to you and your listeners. Thank you very much. Thank you for joining us today, Rafay ji. तो कैसा रहा ये वीकेंड? और अभी तो समर का मौका है, तो मुझे ये भी पता चला है कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं who are joining you in your seminars, they have increased way more than before, क्योंकि अब समर में लोग जरा ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। जी एब्सोल्युटली, जो हालात कनाडा के चल रहे हैं, इकोनॉमी में है, लॉजिस्टिक्स वाले, ट्रांसपोर्टेशन वाले, रियल एस्टेट वाले, तो एक यही इस वक्त एक कारोबार है जो चल रहा है। रिसेशन प्रूफ है, मार्केट ऊपर जाए पैसे बनते हैं, नीचे आए रोज के रोज का टारगेट होता है। और आज के भी हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं और हर सोशल मीडिया पे अपलोड हो चुके हैं। वंडरफुल, साउंड्स गुड। तो राफी जी, जो नए लोग हैं उनको बताएं कि ट्रेडिंग, ये जो आज के दौर की ट्रेडिंग है और जो पहले ट्रेडिंग हुआ करती थी, इसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में जाते हैं तो बड़ा पैसा लूज करते हैं। तो आज नए दौर में जो नया तरीका निकाला है विन लाइफ टाइम में, उससे काफी हद तक लोग सेफ हो जाते हैं अपनी अर्निंग्स को लेकर और अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो आप बताएं किस तरह से विन लाइफ टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। लेकिन टू मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले हम आपको अकेले ट्रेड नहीं करने देते, क्योंकि अगर आप अकेले करेंगे आप ओवर ट्रेड कर जाओगे, साइकोलॉजी या फिलॉसफी ट्रेडिंग की ख़राब हो जाती है। तो आपको मेंटर के साथ बिठाया जाता है। हमारे 7 मेंटर्स हैं, ग्लोबली आपके साथ बैठे होते हैं। नंबर 2 कि आपको अपना पैसा ट्रेडिंग में नहीं लगाना। 2023 के बाद बहुत सारी ऐसी फर्म्स आ गई हैं जो आपको एज ए ट्रेडर हायर कर लेती हैं, तो आपने बिल्कुल अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने। तो अब आपको एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं है। और एआई के पावर की वजह से अब ट्रेडिंग आसान हो गई है। अब वो जो क्रूड वे ऑफ ट्रेडिंग था, वो 3 साल से बहुत मेगा चेंजेस आई हैं। कोई अगर ये काम करना चाहे तो रोजाना कितना वक्त देना पड़ता है उनको, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अपनी जॉब के साथ पार्ट टाइम स्टार्ट किया जाए? जी एब्सोल्युटली, मैं सारों को यही रेकमेंड करता हूँ कि स्टार्ट करें पार्ट टाइम। मार्केट 23 आवर्स अ डे खुली होती है, आप किसी वक्त ट्रेड कर सकते हैं। हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है कि अभी इवनिंग सेशंस में भी लोगों को लेके आ रहे हैं। तो नो मोर देन कपल आवर्स अ डे इज़ गुड इनफ, और आपको सिग्नल्स 23 आवर्स मिलते रहेंगे। इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आएँ, सीख लें कि आपने क्या करना है, और रेस्ट इज़ वेरी इजी। वंडरफुल। तो राफी जी, कैसे आपको ज्वाइन कर सकते हैं? क्या रहेगा पहला स्टेप? पहला स्टेप तो ये है, हमने 5 मिनट का इंटरव्यू किया है। 5 घंटे का सेमिनार होता है, चीज़ों को दिखाया जाता है, बताया जाता है। ऑफिस है, आए। सो एवरी सैटरडे दोनों लोकेशंस पे आप जाके विजिट करें। और अगर वैसे ही देखना है तो मंडे टू फ्राइडे आप हमारे ट्रिनिटी ऑफिस में आके वैसे ही वॉक इन करके देख लें कि माहौल क्या होता है।
So first step is to come to the seminar free of cost. Listen, if it makes sense to you, then join. वंडरफुल। तो वेल दोस्तों, विजिट कीजिएगा वेबसाइट winlifetime.com और जो मैजिकल नंबर है 10 फासलों के अंतराल पर है, ये अच्छी सी अपॉर्चुनिटी। नंबर नोट कीजिए और जल्दी से डायल करें आने वाले सैटरडे फ्री सेमिनार को ज्वाइन करने के लिए। 9052061008, दैट्स 9052061008। राफी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे फिर जुड़ेंगे बहुत जल्द। ऑल द बेस्ट। Thank you. Take care. Yep. All right, this is our local ad. आ रही है जी, ये 32 पे आ गई। मैं ले रहा हूं ना S1 ले रहा हूं ना निंजा का, मैं जा रहा हूं स्ट्रेट 700 पे, ग्रीन बॉक्स के टॉप पे या ग्रीन बॉक्स के बॉटम पे। तो मेरे दो नंबर हैं इस वक्त, 700 और एक्चुअली मैं ऑर्डर लगाया, अगर आप जूम पे लगाएं अराउंड 7, क्योंकि आपका जो मिड का है ना, लेट मी गिव यू अ रीजन व्हाई आई एम पिकिंग अप सच अ नंबर। क्योंकि नाइट का लो जो है ना आपका, तो मैं पिक कर रहा हूँ 715। हमारा नाइट का लो है 707। समटाइम इसको रीटेस्ट एग्जैक्ट करने नहीं आती, सो आई एम स्किपिंग S1 कंप्लीटली, एंड निंजा का भी और सुपर एरियाज का भी सपोर्ट 1 मैं स्किप कर रहा हूँ, इवन दो वहां पर सपोर्ट है काफी, 1 2 3 सपोर्ट्स हैं, बट आई वुड रेदर टेक बिगर पॉइंट्स फ्रॉम 715 क्योंकि इसको ऑलमोस्ट काफी खिंचाई आ रही है जी नैस्डैक S1 के। ठीक है, अगर आपके पास एपेटाइट है रिस्क का, आप ले सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा, ये भी कंप्यूटर ने नंबर निकाले हैं, लेकिन मैं S1 को 800 से 7 वो वाला रोक दिया, मैं नहीं ले रहा। मैं जरा थोड़ा सा नाइट के लो की तरफ जाऊंगा, क्योंकि हमारा लो है 707, तो मैंने $8 का बफर डाल के, अब यहीं से चली गई तो किस्मत में है, हमने 4 ट्रेड्स किए हैं, 4 के 4 ठीक थे, बट बिकॉज इन अबाउट 45 मिनट्स ये सारा वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। आज काफी मूव रही है यार, अब तो सुबह से लेकर अब तक मूव ही चल रही है। It went up quite a bit to 192 से ये डंप हो रही है 812, 29,194 minus 28,812, almost $400 नीचे आ गई है। So it may continue the trend to the down, क्योंकि डेली में ग्रीन बॉक्सेस हैं, याद रखें, डेली में एरो कैंडल नीचे की तरफ है, तो प्रेशर नीचे है। आपको पॉइंट्स दे सकती है, मैं ये नहीं कह रहा S1 पॉइंट नहीं देगी, मैंने सिर्फ अपना रिस्क थोड़ा सा बिलो S1 रख लिया, तो नाइट लो को, और ES को आपको वेट करना चाहिए 75-70 का, अभी 10 पॉइंट और गिर लेने दें। ये अगेंस्ट द ट्रेंड नैस्डैक को उठाना महंगा पड़ जाता है, और पूरे दिन के प्रॉफिट वापस ना कर दीजिएगा खुदा के लिए। अगर आप डन हो गए हो तो नया अकाउंट ले लो, किसी और अकाउंट पे ले लो। देखिए 800 से बाउंस हो रही है, लेकिन नो अभी नहीं। 800 पे खड़ी है, आ जाओ 100 पॉइंट और आ जाए तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊं। मिल गए, टेक्निकली आपको 12 पॉइंट मिल गए, 15 मिल गए। आई डिड नॉट टेक S1, आई डोंट केयर। 15 पॉइंट मिल गए S1 से, 20 पॉइंट। हमारे एरियाज भी पावरफुल हैं, लेकिन मैं जरा थोड़ा एरियाज के बाहर भी कंजर्वेटिव चलता हूँ नैस्डैक में। पुल अप होने की कोशिश तो कर रही है,
लेकिन पैनिक सेलिंग में बाइंग करना कॉस्टली हो जाता भाई। All right, that's done. And S1 is done. 20 points from S1. Did not take. If you took, congratulations. Wow, man. 20 पॉइंट लिए जी S1 ने। दो मैसेजेस आए हैं ये S1 से 20 पॉइंट लिए हैं। गुड। नहीं जी, आप लोगों को म्यूट नहीं किया, आप लोगों की बैटरी ही खत्म हो गई है। ये 2 घंटे के लिए वायरलेस माइक्स बने हैं। आई विल टर्न दिस ऑन। ओके, all right, we're back. Battery had died, so because these wireless mics from DJI, they last about, how long we've been streaming for? We've been streaming for 6 hours and 18. All right, the mic is fixed on DJI on Zoom. It is burning in here. It's 3 screen on over. I need more air conditioning here. Sorry guys, the mic battery, excuse me, died. So because most people stream for what, 2-3 hours, I stream for yes, sorry, my mic. If you, yeah, next time if I lose an audio on TikTok or somewhere, 20 पॉइंट मिले हैं S1 से। इक्वल लो से गई है 60 मिनट का, जो सुबह के 4 बजे था ना, वहां से गई है ये वापस। चलो गाने फिर सुने जब तक 100 पॉइंट नीचे आ लेने में। क्या गाने सुने? थोड़ा जॉनर चेंज करते हैं। song. कोई मोड़ ले आवो NASDAQ ਨੂੰ।
चला मुड़ के नहीं आया 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 मिलिया देश बनाया अपना समझ लिया होगा वैसा की कई होगा चला गाड़ी चला गाड़ी इश्के दी चादर करी जानी होटल दे बेले च चूरी खवा के ते मच्छियां चरानी किधर जा रही वो चढ़ती जवानी किधर जा रही है हुस्नो दीवानी किधर जा रही है
Look at the spike, 874. Yes.
हेलो जी सर, बेहतरीन, एक्सलेंट। अभी भी स्ट्रीम चल रही है, लाइव ही है और उधर सही है। वेरी नाइस, एक्सलेंट। मैं 10 मिनट दें, मैं 5 बजे राइट वे कर नहीं नहीं, मैं बना देता हूँ एब्सोल्युटली। आपको एक सैंपल दे देता हूँ। डन हो गया। नो, सही गया वैसे ओवरऑल। सॉरी, यार है जी। Closing time, lots of volatility.
Might as well sort HDMI. All right, waiting for trade. I don't make things complicated. Just wait for the number. Four o'clock dump or pump.
तेज करें काम नहीं
Look at that dump. Still 706. Still wait for night low 710.
on and drop below 700. All right, guys, let's get ready soon. The night's low. We're 775, but only issue is time is. We got 1 hour left. We don't want to be stuck, so we'll observe and see. Just sorting out my cables that I brought from the office. Stuff I don't need goes back into storage. Look at the volatility, incredible. Anybody still uses optical cables for audio? I doubt it. I need a box for that. Optical cable, which I need for this one, 790. How many watts is this? Sorry guys, this is 500 milliamp of 3 watts. I think this belongs to this device. I gotta check. 500 volts. Will this work? No, it doesn't belong to you. Whose adapter are you? Cool. Now these guys can go into their respective storage boxes. Nope, this belongs to something else. This belongs to that. So it can go to garage. Bank. Number 2.
778. Come on. We're getting close to our number, but we want not 100% yet. See, you think it's gonna go south and it goes long. You think it's gonna go long and it goes south, right? So that's some magic of NASDAQ for you. Oh, 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 oh. Incredible. Could still drop. Because green boxes are there in 60 minutes. क्या क्वेश्चन है प्लीज
Still no number. So we're still waiting. It's okay. Wait and wait and wait and wait and wait until we are reasonably comfortable. Okay. Kind of stuck in this one though. All right, 766. Does it break? 60 points to go, or actually 50 points before my order gets picked up. I'm at 716. Oh, excuse me for getting tired. Look how much ES and NASDAQ kind of got synced now. It went from 29,194, 29,194.
194 to 28,070, almost $428 move. Incredible. तो आजा मैं फंसा लिया. No volume, guys. 413 almost. No volume. Pass it from here. That's it. 5 o'clock. So I'll order 4:45. It'll come in half an hour. So yeah, that's fine. How much, Papa? How many sizes is in one large? Because there's three people coming, including me. Let's do two large. One large, one small. Oh no, two large. But kids aren't in here. No, it's Okay, okay. who's picking up pizza? We'll figure something out. Oh yeah, नहीं लगा ना. Ahora, che, abre los ojos, open your eyes. ਓਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ
ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿੱਲੋ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀਏ ਤੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ Yeah baby Yeah Yeah baby Ah baby Yeah baby ਓਏ ਮੋਰਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਲਾਲ ਬੰਗ ਬੜੀ ਜੱਚਦੀ ਓਏ ਰੌਣਕੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਦਾ ਏ ਗੇੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੋਰਨੀ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੀ ਓਏ ਸੰਧੂਆ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਸੰਧੂਆ ਕਬੂਤਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਪੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ Ah baby Yeah Yeah baby Ah baby Yeah baby 762. Still my entry is at 716. ਨਖਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਨ ਗਿੜ ਚੱਲਾ ਓਏ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਕਰਦੀ ਜਰਾਰਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਮਾਰਦਾ ਏ ਮੱਲਾ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਚਰਚੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੇਰੇ ਚਰਚੇ ਰੰਗ ਨਾ ਕੜਕ ਕੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ Ah baby Yeah Yeah baby Ah baby Yeah baby ਓਏ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਟੇ ਨੀ ਬਲਬ ਵਾਂਗੂ ਜਗਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਟੋਏ ਬੜੇ ਫੱਬਦੇ ਵੇਲੇ ਬੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਏ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਈਓ ਕੋਰ ਚ ਮੜਕਣਾ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋ ਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ Yeah Yeah baby Yeah. Very close, 754. I don't. अच्छा कुछ दे
ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਅੰਦਰੇ ਆ ਹੁਣ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰੋਲੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿੰਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁਣ ਅਸਲੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਿਦਾਰ ਯਾਦਾਂ Yo, ਪਿੰਡ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੇਕ ਲੈਣ ਸੜਿਆ ਤੂੰ ਆਖਦੀ ਏ ਜੱਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਵਾਂਗਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੇਕ ਲੈਣ ਸੜਿਆ ਤੂੰ ਆਖਦੀ Nikhani Sahab, I'm still waiting for 716 नाइट लो है हमारा 707 तो हम 716 का वेट कर रहे हैं लेकिन सिर्फ इशू ये है कि मार्केट 423 है रुक ना जाए अब तो आप फंस ना जाए उसमें हाफ एन आवर है वही थोड़ा बफर भी देना होता है मार्केट खुलने के बाद राइट वे में आपको नंबर दे रहा हूँ 600 का 600 पे सपोर्ट पड़ी है आप जा सकते हो 600 तो दो नंबर है नीचे के 716 एंड 616 $100 का डिफरेंस वहाँ पर S2 पड़ा है वहाँ S2 निंजा का पड़ा है वहाँ फिब का बॉक्स पड़ा है सपोर्ट अच्छी है 61 एग्जैक्ट नंबर है 600 के पास या एग्जैक्टली मैं जाऊँगा 605 से 610 से तो 715 और 610 ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਕਾਰਵਾ ਪਿੰਡ ਕੇਕ ਲੱਕੜੇ ਦੀ ਨੇ ਤਲੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਾਤ ਨਵੀਂ ਬੰਦੀ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਗਾਲੀ ਦੀ ਹੋਰ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਾਥ ਨਵੀਂ ਬੰਦੀ ਗਾਲੀ ਕੱਢ ਗਾਲੀ ਦੀ ਚੜਾਈਆਂ ਵਟਾ ਲਿਖੇ ਉਤਾਰ ਤੇ ਆਸਲੇ ਵਟਾ ਲਿਖੇ ਉਤਾਰ ਤੇ ਆਸਲੇ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਨੇ ਸੀਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੇਕ ਲੈਣ ਸੜਿਆ ਤੂੰ ਆਖਦੀ ਏ ਜੱਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਵਾਂਗਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੇਕ ਲੈਣ ਸੜਿਆ ਤੂੰ ਆਖਦੀ ਏ ਜੱਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਵਾਂਗਾ DJ Flow ये गुचियर मनी विच रोलदी जवानी चेक करदी बरैना वाले टैगनी आज दसा ते सुनी दी फ्लैश दी की तेरे तेरा सवारी ओ काला कुर्ता पजामा साथे पिंड सोया मसर तारी वाला चिट्टिया वलैगनी छुट्टियां रखिया के सारे कर दी मैं मगा ये गुचियर मनी विच रोलदी जवानी चेक करदी बरैना वाले टैगनी आज दसा ते सुनी दी फ्लैश दी की तेरे तेरा सवारी ओ काला कुर्ता पजामा साथे पिंड सोया मसर तारी वाला चिट्टिया वलैगनी छुट्टियां रखिया के सारे कर दी मैं मगा Swaggy, oh vaquera 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 swaggy. Jandir gane sat pakne yarane जिथे भी मिलाइयां नी यारियां गल दिल दी ना कहिए ताइयां दूर रहिए ठग हुंदियां नसूरतां प्यारियां बनदी है कैसे जिद्दी दूर फैशन ने पति चुकी फरे आए दो दा बैग नी आज दसा दिन सोनी नी फैशन की तेरे यार दा वखेरा सवारी yeah check कर मत दा swag below गड्डी ते कोरता पजामा तुम्हें black below yeah जट दा attitude भाई ना साब सकदा नी तेरा रुचि वाला बैग वेला ओडी छोटी सब पिंड विच रुलदी शौक नाल दिलो यसी रखे आए जामा चंडीगढ़ विच मारे गेड़ी यार तेरा जन्म इंडिया दे विच घुमदा यो बामा नामा हर कोई जानदा वे सानू लोड़ नी गलती घुमी दा नी हत्था जटा दा मुंडा वेखो करदा है चल बट कुड़ियां ने कहदी मुंडा बड़ा तक साडी गल मारी जिथे अड़ जे गरा
ਸਾਰੀ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚ ਕੇ ਦੂਰ ਨੂੰ ਭਗਾਈਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈਦਾ ਨਬੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਪਰਵਾਇਆ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਨਾ ਬਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ ਮੰਗੀ ਚੋਰੀ ਜੜਨੀ ਸਮਥਿੰਗ ਸੋਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਵਕੀਰਾ ਸਵਾਈ ਉਹ ਵਕੀਰਾ ਸਵਾਈ ਉਹ ਵਕੀਰਾ ਸਵਾਈ ਉਹ ਵਕੀਰਾ ਸਵਾਈ Okay. If you guys miss any numbers, I'm gonna start doing this on Zoom. So after I will give you so you don't have to constantly ask me, or I don't have to constantly say. If you go on Zoom or live stream, Zoom is a little faster, but you are able to I think if it makes sense, I will set up this way. Save as. Come on, it's just my laptop is not capable of handling that many clients with Zoom. It's just a small NASDAQ numbers. Okay. Oh. TP generally 20 points यार SL आप एवरेज कर लो TP अगर आपको जाना है 30 पॉइंट मिल जाते हैं बड़ी बड़ी स्विंग्स ले रहा हूँ मैं कोई नियर बाय स्विंग्स नहीं ले रहा सो TP आपको मिनिमम यार 20 तो मिल ही रहे हैं मिनिमम सो देखें इस वक्त बिल्कुल S1 से बाउंस हुई है टू द डॉट 8 है लेकिन अगर 612 बॉटम ऑफ द 60 मिनट का मिड वहां खड़ा है 600 पे अगर ले ली तो रीजनेबल है बहुत कंजर्वेटिव है 600 रख लें I will give you guys the precision half an hour. I will give you guys the precision of this way. So let's say 716 to range. Let me give you this 700 to 720. That will make it easier. 600 to 620, somewhere in between. If it stops at 180 to 180 to 190, and this is let's say if it goes from 240 to 40 to 250. So this is the ranges it should bounce from because it's so difficult. Yesterday I missed it by a tick, no problem, but we'll go from there and I'll start writing these numbers as a range. I know, there is a resistance before we go there. First, it has to climb, next 29. And what's our high for today? 29, 1110, I think. 29,110. It has to break. There's lots of resistance. Put that in. So, because we have taken it multiple times, these would be the first attempt. 700 to 740. First, it should. I will write it this way. So first, this number will come
then this should come. Then if it's climbing up, we can wait there, pick something up, but this is next resistance. NASDAQ is just numbers. We're almost there, 433. Managed to push a full session of 9 to 5 trades, 8 hours. I think we're up very close, getting there. We are up 7 hours and 30, full 8 hours. We had lunch, we had watermelon, we had a couple of drinks, tea. Did not walk around much, but managed to sort a couple of boxes. Now it's Monday evening. There's no earnings. So let me fix, I got a orange jewelry. Let's go for a walk. My class would be 5:45 p.m. Okay. So let me book this. Filter, trend. Oh, sorry, 7 p.m. So that's good. Maybe I'll try to do a session late in the evening. We'll see. Book this. Almost. There's no volume. The ES is a little difficult to do sometime with areas because NASDAQ is slow, ES is dual slow. So we'll keep this format. And rest of the stuff you guys can get, base, area, support from our 750. Let's listen to songs. Complete the workday. Miss Pooja का है ना? इसका ये गाना अच्छा है.
हमारी बेटियां दा पिंड संग करे ना कुमारी बेटियां दा पिंड संग करे ना कुमारी पूरी सुरमा अखां दे विच पाई रखदी है नच्ची जान के जान के गले च मंजा नच्ची रखदी है पूरी जान के जान के गले च मंजा नच्ची रखदी है पूरी जान के एटी पगड़ी दा रखे लाड लामुगा के एटी पगड़ी दा रखे लाड लामुगा के पटोल के मोरनी पाई तेरे सारी पट्टी चार पांच दुनिया बजाई तेरे दानी पट्टी चार पांच दुनिया बजाई तेरे दानी पट्टी चार पांच जावी ना मारे किनु प्यार दी जदों हंस के खंडी बजे हमार दी जदों हंस के खंडी बजे हमार दी जावी ना मारे किनु प्यार दी जदों हंस के खंडी बजे हमार दी चिट्टे मोतियां तो रंग रूप चौधरी दा चंद चिट्टे मोतियां तो रंग रूप चौधरी दा चंद खोल जुल्फां गले तेरे ते पाई रखे दी नच्ची जान के गली च मंगा नच्ची रखे दी पूरी जान के गली च मंगा नच्ची रखे दी पूरी जान के पिटो पिछिया कुड़ियां टिकाड़ियां चंगी बड़ी दे कलेजे अग्गा लाड़ियां पिटो पिछिया कुड़ियां टिकाड़ियां पिटो पिछिया कुड़ियां टिकाड़ियां चंगी बड़ी दे कलेजे अग्गा लाड़ियां मुंडा रूपदा शिकारी कुड़ी कटती कवारी रूपदा शिकारी कुड़ी कटती कवारी पाके अंधेरा का जादू पर मारी तेरे दादी पट्टी चार पांच कुड़ियां टिकाई तेरे दादी पट्टी चार पांच दुनिया बजाई तेरे दादी पट्टी चार पांच जमा हुकन दितारन नु हो पोग चुनी दे सवारी मात जंद I can't listen to the whole song. That's my problem. Let's close it with some nostalgia, of course. All right, that's a little bit old song, but may or may not like it. It's
ਮੁੰਡਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸਵਾਈ ਮੁੰਡਿਆ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਗਈ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਗਈ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ ਵੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਵੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਕੰਨਿਕਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਨਿਕਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਟਣ ਹਿੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਨਿਕਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਨਿਕਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ All right, 15 minutes to go. Let's see what happens next. You're a great singer. ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਪਿਆਰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀ ਦਾ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਵੱਲੀਏ ਪੰਜ ਟੁਕੜੇ ਕਦੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਵੱਲੀਏ ਪੰਜ ਟੁਕੜੇ ਕਦੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਵੱਲੀਏ ਪੰਜ ਟੁਕੜੇ ਕਦੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈਣ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਨ ਰੱਖੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇ ਆਰੀ ਮੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਦਾਰੀਆਂ ਰੰਗ ਬੰਦ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸੀ ਕੱਟ ਦੇ ਮਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਨੀ ਛੱਡਦੀ ਮਯੂਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਨਾ ਪੀਤੀ ਦੀ ਦੁੱਖ ਬੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਵੱਲੀਏ ਪੰਜ ਟੁਕੜੇ ਕਦੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਵੱਲੀਏ ਪੰਜ ਟੁਕੜੇ ਕਦੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਨਾ ਬੁੱਲ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗ ਵੇਚਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ੋਪ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੰਗ ਚੜੇ ਜਾਣਦੇ ਕੁਝ ਜੱਟ ਗਈਆਂ ਕਈ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਿਹਾਰ ਵੇ ਕਦੇ ਪੀਲਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਵੱਲੀਏ ਪੰਜ ਟੁਕੜੇ ਕਦੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਵੱਲੀਏ ਪੰਜ ਟੁਕੜੇ ਕਦੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਵੱਲੀਏ ਪੰਜ ਟੁਕੜੇ ਕਦੀ ਦੀ
ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਡਰਦੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਚਮੇੜਾ ਪਿੰਨ ਧਰਦੇ ਓ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਓ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਇਹ ਮੁੱਲੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਦੇ ਓ ਯਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆ ਓ ਯਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕਰਦੇ Hey, I'm on the live stream. Give me 2 minutes. Don't come in front. No, no, wait. I'm coming over there. Give me 2 minutes. I'm coming over there. Almost. No, no, they're not in the live stream. No, they can't see. Go turn on YouTube on the main screen. I'm coming. Color robot. Okay. Turn it on. Okay. Nice. Okay, sorry. Take off the caps. The box is this. Right here, look. Okay. It moves and it colors on paper. Nice. Digital 3D printer. But also, Okay. another thing. I didn't make it correct the next thing, but at least I tried. Yeah, this thing. I made a pocket with the dragon and my name. Where'd you guys go? Community center, tablet. All right. Can you turn it on and see how the live stream is coming? Can they hear you? Of course, I'm talking. Close this door. All right, guys, 770. It's not gonna go anywhere in next. So if you have orders, make sure you cancel them or close them. Otherwise, if the market opens with a gap or something, you're gonna be stuck. Because many funded companies, these orders are pending. So make sure that close your orders, etc., etc., etc. Right. So I'm gonna close this. Second connections and then okay, this is closed, nothing is there. I'll close these orders, we'll worry about it after 8 minutes to go. Exciting day. So I did not get tired because of the 2 hours to go and 2 hours to come back. So that saves me 4 hours. Plus, there were no tech inquiries, so that saves me time. So that's why I did not get too much tired on today's stream. Let's see how many days I can pull this off. Some days will be done faster depending on the market, but majority was okay with MNQ or NQ or 5. I will never say MNQ versus NQ. I will never say lot size. I will never tell you TP and never tell you stop loss. That's just the way I am, very much positive when it comes to my entries, that I don't need any stop loss. If you're doing my recommendation, and personally what I do is $1,000 of buffer, 1 MNQ is good enough. If you are, what's your target? $100 a day, not a big deal. So let me send my results of my Lucid and few others. You'll be fine. So Lucid trading, login.
So my funded lucid is heading to, this is my today, $200 with a couple of micros. Yes, I know this is a bit more engaging. It gives me a little bit more relief in order to, hopefully I'll keep the momentum going. 28. So of course, Happy's class is different. This is my results, general public on here, and a few others. And this is a little bit more aggressive trading compared to conservative. So I do multiple micros. Web dot. Slow. That's all I could find an opportunity. So. I know, but some people like the other way. So you will always have people who disagree, but it's okay. If you care too much about people, you should read this book, The Subtle Art of Not Giving a Damn. The moment you don't give a damn about anything, you'll be free, my friend. You'll feel like a bird, free. Stop thinking what people say. Just do your own thing, man. Because you can't win them all. $780. Yeah, it could go and retest 600, fill in the 60-minute box. So there you go, we're almost there. So पैसे लिए आप लोगों से तो हलाल भी किए यार, खाली एंटरटेनमेंट भी देना, 8 घंटे रेडियो स्टेशन चलाने की तरह है, रेडियो पे बातें करना, ट्रेड करना. सो हमारा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी रखेंगे, अदरवाइज तो बोरिंग हो जाएगा खाली, क्योंकि अब मैंने सिखाना कुछ नहीं है तो मेरी लाइफ ईजियर है. तो like 3 more minutes, we'll call it a day. हाँ, चलो इस पे फिनिश कर देते. मेरी प्लेलिस्ट में चलते रहते हैं गाने. बड़े चेते आउंदे ने यार यार बुल्ले हवा दे बुल्ले बड़े चेते आउंदे ने यार यार बुल्ले हवा दे बुल्ले सी बाता करने का जी पड़ते सी हाथ पाई और मुझे पानी दुनिया बकरी सी लड़े लड़ाइयां ना हो पढ़ाइयां तारा फिर करनी किसे ना करनी खुला I don't know, 3 minutes. कदे लाउड कलासाना कदी लौण कलासान बैठ कंटी पाके अब चीनी पीते सी चाह बिलार सलाह के ले कुछ करिए तब की आसमानी सब
ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਗਾਏ ਕਰਾਈਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸਾਈਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੇ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਨੇ ਯਾਰ ਲੰਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਮਕਾਉਂਦੇ Order. I 10 minutes. Okay. ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਗਿਲਦਾ ਸੀ ਐਂਟੀ ਸੀ ਪਿੱਟਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਨਿੱਤਦੀ ਯਾਰ All right, guys. See you guys at 5 o'clock. Enjoy. See you guys tomorrow or earlier. If I come back, I'll come back. We'll see. Let me just finish this 2 minutes here. So my 8-hour streak is done. This is TV is done. Support is done. This is done.